5 p.m. of the exam, you should study. You should keep a gap of 12 hours, 10 hours before exam. You should stop doing a practice studying and all. That is obviously you should not do it. So maybe tomorrow evening you should not. But I will not say that, okay, I just stop studying from now onwards, stop discussing from now onwards for your exam. That will give you more stress, it is not possible. So you will not, you will have. So we will talk in this discussion. This sessions are lives also. We'll be live for next 4 or 5 years. So complete whole idea about your aptitude and design, so that we are gonna discuss. Just give me 1 second. So that is there in this session. Now obviously we'll have those discussion, and I'll take questions also one by one. But let's start with Prashansa questions. Right, Prashansa, we should? आपने सबसे पहले पूछा है तो. Yeah. So first of all, we'll take Prashansa one, and that will be give the relief and rest of you also, because I see bit of stressful faces over here. The most important thing is, you should know now you are going to write the exam, and you know it. Yeah, you all knew it. Okay, I am gonna write the exam on 14th. Exam देना है ना, या कोई ऐसा भी आप exam नहीं देना due to exam and stress. Yeah. So everybody will write the exam. So there is a two-way. Either बहुत tension हो तो exam में मत दो. I will suggest. You will say what you are talking about. Whole year we have prepared and now you are saying don't write the exam. नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए which give you the extra stress. Or exam के दिन you feel like okay, I am having a fever or something else. Yeah. So do not let the stress come. अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो let us know. We will discuss about it. We'll talk. We'll try to solve out that problem also, because exam stress management, we have a separate people in the team to help you, guide you. But those relevant questions are, like suppose Prashansa saying, it is very true. None of the students, Prashansa, 99% students not able to balance all the 3 questions properly. ऐसा नहीं हो पाता है. I think all the viewers also, they know it, and they knew it very well. When you are going to solve the paper, जब आप paper solve करने जाते हो, तो आप तीनों question के लिए same effort नहीं रखते. It works same way. The morning when you wake up and till the night, the energy level you are not able to maintain the same. But किसी दिन आपकी energy level बहुत ही अच्छी होती है. How? The day you are happy, the day you are traveling, the day you are with the friend group, the day you have something which really exciting you. Okay. So as simple as that. इसलिए आपको एग्जाम स्ट्रेस नहीं लेना है. स्ट्रेस लेके तो अच्छा नहीं हो सकता. खुश होने से ही अच्छा होगा. एक बच्चे ने बोला सर मेरी तो तैयारी नहीं हो, आप बोल रहे खुश हो जाओ, बहुत अच्छा होगा. So there is no other way, It is not like टेंशन लेने से अगर अच्छा होता तो I could give you some medicine pills for the tension. खा लो, ज्यादा टेंशन में रहो. That is not the way, So whatever the best you will do it in your exam. It's only possible when you are not in tension. मैंने जैसे कुछ चीजें मैं एग्जाम के बाद बताऊंगा, 1-2 महीने बाद बताता हूँ मैं इस साल क्या क्या नया सीखा, मैंने क्या किया. I do remember from last 12 years I'm visiting the exam center. पहले आपकी निफ्ट के एग्जाम की बात करता हूँ. Without fail, बीमार हुआ तो भी गया मैं, और beat at exam center outside or inside. Yeah. So that is there. That experience is there which I am sharing you today. I told you the whole part of it because I do not want to keep it for tomorrow. कल का बहुत ही अलग idea. कल के sessions में क्या होंगे? Today's sessions, the idea is the holistic. Me and Navin, I told you, for aptitude and design, the both will take care of it. How exclusive it is, you can understand. ये 12 year में I have seen many of my senior getting the pass out जिनको मैं maths या basic पढ़ाता था. You will surprised to know that initially मैं maths ही पढ़ाता था. I was from PCMB or I was always good in aptitude, तो थोड़ा वो part था. But I'm not that good right now because I'm not in practice. But yeah, still I can teach you few of the tips and tricks. So that's what you will have Navin sir. Though himself got the rank in Nift twice in single digit in for BFT, MFM. MFM also he has the rank 4-5. Industry experience भी है, he knows all in and out. So it's a complete package. आपके जो भी questions होंगे about college, exams, patterns, industry. So that's what such people needed before the exam. We do not need expert of the subject like he's a mathematician.
तो यहाँ पे कोई टॉप मैथमेटिशियन की नहीं, यहाँ पे ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि आपको परफेक्टली बताए, इसलिए नवीन सर भी सेशन में होंगे और दैट इज आल्सो एक्सक्लूसिव. So the how my role is exclusive from last 12 year I know 100 of the reason if you last tell me. तो आईडी की वजह से, लेट होने की वजह से या किस किस रीजन से लोगों का एग्जाम छूट गया. So whatever I am telling you behind that the bad story को साइड करके जो ये करो आप या ये करना चाहिए, that is ideal. I'll not tell you the student name. One random student called me today and saying me, sir, aptitude 150 marks का होगा. I was surprised. Which exam you are writing is because she was discussed with me about the CAT throughout, and I thought she is a BDES student, and then she is saying me my aptitude is 150 marks. मैं कहा कौन सा एग्जाम दे रहा हूँ बेटा? तो नहीं मैं तो दे तो रही हूँ मैं BDES ही, but BDES में आप aptitude मेरा 150 हो. मैंने कहा किसने बताया? तो मैंने एक वीडियो में देखा ऐसे. So access information को हम अभी से erase करेंगे at least till your exam. I'm not saying that you do not doing the research and stop doing your basic other thing. Access information is the problem. There's a lot of information if you go and type in Google, तो आपको वो गलत ही मिलेगा क्योंकि वो किसी और की गलती है. That is not a mistake of a Google, because somebody like us, that's a machine which keeps in search और आप उसको देखते हो किसी और ने उसे डाल रखा है. तो आज से that's what it's, this video is live also, YouTube also and here also. जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए मेरा आइडिया है एटलीस्ट आप इसको फॉलो करिए. And I am giving you the ensurety you will have a best result. Last year भी लगभग सारे बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट था and they all got the desired centers and all. And I am talking a live session. 40 बच्चे बैंगलोर से they got the Bangalore Nift. कई लोगों ने बॉम्बे एंड दिल्ली ये सब भी ऑप्ट करा, And 2000 plus student was in contact last year during the pandemic for their counseling and the other things. So we need to understand जो थोड़ा एक्सपीरियंस है जो आपके काम आ सकता है, हाउ इट वर्क्स. मैंने एक और चीज लास्ट वीडियो में यूट्यूब पे शेयर करा था, एक वीडियो आई थिंक वो लाइव क्लास नहीं था, दिस इज लाइव क्लास एंड द यूट्यूब लाइव बोथ. तो उसमें मैंने बताया था आई हैव गिवन 4 to 5 टाइम एग्जाम्स. सो द सब कपल ऑफ किड्स दे स्टार्टेड आस्किंग मी ऐसा क्यों किया, क्या हुआ. सो यू नीड टू नो द थिंग्स बिफोर गाइडिंग यू. आई ऑलवेज बिलीव इफ आई एम टेलिंग यू सिचुएशन टेस्ट में ऐसा मॉडल बनाओ, तो आई नीड टू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू, हाउ यू विल गेट द मार्क्स. से टीचर ट्रेनिंग भी होती है, तो मैं बात कर रहा था, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट डिवाइड द मार्क्स आउट ऑफ 10 आल्सो भी आप मार्क्स करो तो कैसे करो, क्या होना चाहिए. तो एक बेसिक चीज क्या होगी, मैं वहां से शुरू करता हूं. सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ Trishana क्वेश्चन, हाउ यू विल मैनेज द क्वेश्चन इन अ वेल. फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टे हैप्पी, यू हैव टू मेंटेन द एनर्जी लेवल थ्रू आउट. लाइक सपोज लास्ट वीक आई हैड अ फोटो शूट, 2 रात में मैं आई थिंक 3 घंटे सोया था, बिकॉज़ दैट्स माय पैशन, आई लाइक इट. So if I didn't sleep also, we started morning 5, we ended with 1 a.m. night, and again we started next day 5 a.m. So we do not have any problems, because that is what something is there. Something is there who is telling you, okay, no, you have to do this. Hey, you have to wake up. Hey, you have to do, तो वो होता है सबके लाइफ में. तो आपको किस चीज से वो पॉजिटिव वाइब्स या किक मिलती है उसको फाइंड आउट करना है अभी. और जिसको भी प्रॉब्लम है आप शेयर करो, we'll discuss one-on-one also later on. Now let's come to this part. One segment is done here. जो आपको खुश रहना है, बहुत अच्छे से रहना है, करना है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. दुखी होके, परेशान होके कुछ बढ़िया नहीं होना, इसलिए खुश रहना. क्लियर. सेकंड पार्ट ऑफ इट, बिफोर सेइंग दैट हाउ तीनों क्वेश्चन आप मैनेज करोगे, वी शुड नो उस क्वेश्चंस में करना क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन ऑफ Trishana इज, सर हाउ टू डू इट बेस्ट. आपको लग रहा है बेस्ट कर रहे हो, बट क्या आप बेस्ट कर रहे हो अपने लिए? मान लो देयर आर द बॉडी इधर एल्कलाइन और एसिड, या तो एसिड ज्यादा होता है, एल्कलाइन अच्छा होता है, राइट, आई मीन ज्यादा होता है, सॉरी. तो आप मिल्क ले रहे हो, किस बॉडी में मिल्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए ना. जैसे लाइक सपोज शुगर पेशेंट को नॉर्मल डेज में आप शुगर खिला रहे हो, बढ़िया नहीं है, बट जब अगर लो हो जाता है शुगर, तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, तो उनको शुगर खिलाना होता है टू गेट नॉर्मल या थोड़ा बेटर हो जाए, राइट, ट्रू. तो आप अपने एग्जाम के लिए जो कर रहे हो, whatever you are doing it for your paper, आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, क्या आप अच्छा कर रहे हो? That is the big question. One student, like, no, I was surprised. She asked me, sir, if boxes are not there for color, do I need to make the box and then I have to make the fill the color? मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा. I don't know from where that idea comes. What was the source of information? And from where all such question comes in a mind, please ask me. Anyone whomsoever is here, such questions clear कर लो. I am sure, जितने बच्चे निफ्ट का एग्जाम देते हैं, 1/3 बच्चों का रिजल्ट होता है. दैट मींस हर एक तीसरा बच्चा शॉर्ट लिस्ट होता है. आपका कंपटीशन इतना इजी है
It's hell easy. We say that it's very difficult, not at all, honestly. 9-10 हजार बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, क्यों नहीं इस ऐसी जगह का 100% रिजल्ट होगा जहां से आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि होता ही बहुत इजी है, किसने का एग्जाम बहुत हार्ड है। 3000 बच्चों की एडमिशन होती है, 30,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, हर एक 10 में बच्चे का एडमिशन होना है किसी न किसी कोर्स में, more than 3000 seats including MFM, MFT, BDesign, and all the courses and all the department you don't have competition 10:1 also, ratio is that, it's not engineering exam 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, IIT नहीं मिलेगा। तो getting into Nift is not such a big deal. I said that I'll talk about the marking also, so इसलिए I'm slowly coming in that part. Now the reason is second part of this particular section. You guys will share some paper I have already discussed, and हम उस पे भी बात करेंगे, अभी आएंगे marking. Marking में क्या होता है? Marking, and then after the marking we'll come to the how to manage the paper part. Marking thing is, let's keep, do not keep marking 30, 40, 30. Let's keep marking here 10, 1 questions. अभी मैं बोर्ड पे तो यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, इन जनरल बताता हूँ, because you also have done the enough practice, 10 से ज्यादा कई सारे मॉक टेस्ट आप लोग दे चुके हो। Take a very basic topic, save water. What was your question, Prashansa? You said if save water, most of the people will get the similar idea, right? Okay, let's talk about this topic first. I'll take few questions also. Prashansa, if the save water is the topic, what comes in your mind? Idea क्या है? Like the first thing that comes to my mind. I'll ask rest of you also, so don't think it's only personalized questions. So be ready for your answer, right? Yeah, Prashansa. First in your mind, your mind will take a break and you will think. That's good part. Not a problem. You start doing a brainstorming. So Prashansa is doing a brainstorming. I'll go to Anushka. Yeah, Anushka. Your turn. So, a bottle, a plastic bottle, in which अर्थ का जिसपे ब्लू और ग्रीन से अर्थ का टेक्सचर बना होगा और वो नीचे से थोड़ी थोड़ी टूटी होगी, जिससे पानी नीचे क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, क्लियर बोलो। पानी होगी, बॉटल होगा, उसे एक लाइन में एक्सप्लेन करो, बताओ क्या होगा। एक प्लास्टिक बॉटल होगी, उसमें अर्थ बना रहेगा, मतलब ब्लू और ग्रीन से पूरा बना रहेगा, और नीचे से वो टूटी रहेगी, वेस्ट नीचे से वो पानी गिरता रहेगा, ऊपर साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा ब्राउनिश होगा, जिससे कि अर्थ से जो पानी जा रहा है तो अर्थ जो है सूख रही है और एनिमल्स जो है वो थोड़े मर रहे हैं और पेड़ बहुत कम हो रहा है। देखो आज ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, हम जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे भी, यहाँ भी, चैट में भी, आज ये सब की दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आपको ये पहले समझना होगा क्वेश्चंस क्या है। जो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास 12 ईयर का लाइव एक्सपीरियंस मींस मैं 1 साल एग्जाम देके मेरा टॉप रैंक आ गया, मैं यहाँ आ गया, उसके बेस पे बात नहीं करूंगा। मैं क्लियर ऐसी बातें करूंगा जो 12 साल में अगर मैंने 10,000 बच्चों के कांटेक्ट में आया, उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने एग्जाम दिए, 10,000 एटलीस्ट मिनिमम, है ना, 1000, पिछले साल ही 2000 लोग थे कांटेक्ट में, तो उन्होंने क्या क्या किया, और पर्सनली मेरे कई कांटेक्ट रहे, और थ्रू आउट जो कांटेक्ट में रहे, मैं लास्ट वीक काउंट कर रहा था, तो एटलीस्ट 100 से ज्यादा लोग तो 10 पॉइंट लाया कॉलेज में या टॉप कर गए, मतलब थ्रू आउट कॉलेज में भी टॉप हो गए वो, यहाँ से वहां तक। तो हम कर सकते, पता है, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में एक छोटा सा लाइन होता है, तो सक्सेस एंड फेलियर में भी एक बहुत छोटा सा लाइन होता है। तो आप सब एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ बनाओगे, एटलीस्ट जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं क्लास में और यूट्यूब में, ये सब लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं। दैट मीन्स आप सारे लोग उनसे आगे हो जो पूरा पेपर ही नहीं समझ पाएंगे और अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक स्टेप तो आप आगे हो, अपने आप को तो आप विनर लिस्ट में ही रखो, तो एटलीस्ट यू विल अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन एंड यू विल गेट द मिनिमम मार्क्स टू गेट द कट अप, उतना तो आ जाएगा। तो ये फाइट नहीं है जो सिलेक्शन कैसे होगा, द फाइट इज हाउ यू विल गेट द टॉप रैंक, दैट्स व्हाट यू गाइस गोना बी चैंपियन, राइट, एग्री। तो अब ना आइडिया उस लेवल का सोचना आपको, जब आप सोचते हो ना अपने लिए जो बहुत बढ़िया, तो मुझे लाइफ में बिलियनियर बनना है, तो आइडिया यू विल कम अप विद द बिजनेस प्लान व्हिच इज द बिलियनियर। व्हेन यू विल थिंक ओके नहीं मुझे कॉलेज खत्म करके 5 लाख का जॉब करना है, 10 लाख का जॉब करना है, so your all idea is around the job, how to develop the portfolio, how to build all these things. And I know one of my junior, very talented, he has taken a 1-year dropout from IT. Now again he joined the IT Bombay, and you will not believe it, he is having a 100 crore company. Maybe your her
maybe I think his sister is here in session or not, I don't know. So when I met, I was so proud. I mean, like मैं उनसे मिला, बात हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एक मेरा स्टूडेंट था अभी, वो जो है, he is having around. Are you talking about my brother? प्रशंसा यहीं पे है ना, वो मैं आप कुछ बताओ भैया के बारे में. मैं उनसे लैक्मे फैशन वीक में मिला, वो अपने मॉम डैड को लेके गए थे, वेरी डाउन टू अर्थ. और प्रशंसा यहीं पे वो बताएगी, इट्स नॉट अ स्टोरी आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. और आई वाज सरप्राइज, मुझे लगा ये पास आउट, ड्रॉप आउट लेके इतना गट्स होना चाहिए, है ना, ऐसे करने का. तो मैं कोई सारी रियल स्टोरी बताऊंगा मैं, तो वही एक्सपीरियंस का होता है. मेरे पास और कुछ नहीं आपके लिए, मेरे पास गूगल वाली स्टोरी नहीं आपके लिए, मेरे पास वो सारी स्टोरी नहीं है जो लोग क्रिएट करते हैं बेस पे. आई हैव एवरीथिंग अ जेन्युइन एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ थ्रू आउट, है ना. 2 साल पहले प्रशंसा ही मिली थी मेरी, आई थिंक नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 1.5 साल हुए प्रशंसा, 1.5 year ना. Yeah, 1.5. So I mean, आप लोगों में कुछ शायद पहली बार मिल रहे होंगे, कुछ महीनों से जान रहे हो. It's never changed because it's all the practical experience based. So it is very important in your life. You should be clear about your ideas, your concept. आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है. पूरा पेपर कर लिया, मुझे कॉल करके ऐसे पूछते हैं, सर आप बता दो ना एग्जाम में क्या करना. आपने क्या किया पूरे साल, मेरे से पूछ रहे हो क्या करना. आपको सोचना होगा ना मैंने क्या किया है, because that is what gonna help you in the exam, right? कैसा प्रशंसा अभी भैया का सब कुछ बढ़िया? हाँ सर, बढ़िया चल रहा है. बिजनेस कैसा चल रहा है उनका? हाँ, अभी भी वो ऑफिस में ही है, और अभी तो आई थिंक वो कॉलेज पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब ऑनलाइन चल रहा है तो अभी उसी पे ध्यान दे रहा है. बढ़िया ना, that's a boon for him ना, he can manage the college also online. Yeah. and office also somehow. कॉलेज का प्रोजेक्ट बोलो ये करवा ले, वो क्या कहते हैं, आउटसोर्स करवा ले. एग्जाम बस देना होगा. That's great for him. So well, I would like to take his even one of the videos counseling ऐसे, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे कंट्री में. If 5 crore youth will become a self dependent, 5 लोगों के लिए जॉब, अगर 5 करोड़ लोग 5 करोड़ लोगों के लिए 5 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करेंगे, दैट विल बी 25,000 25 करोड़ जॉब. एंड 125 करोड़ लोगों को खाना वाने का दिक्कत नहीं होगा. गवर्नमेंट को फिर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज नहीं बांटना होगा. इतनी इजी सी सिंपल सी बात है. So we do not work on ideas, we do not believe in this, and the whole global system is channelized. The moment you will started working on your ideas और आपका आइडिया सेल करने लायक है, दुनिया के किसी भी कोने से पैसा आ जाएगा आपके आइडिया. तो मेरा वही मतलब, मैं शुरू से मेरा ये ट्राई रहता है, जो व्हाई डोंट यू डेवलप इन दैट वे. ये बोलोगे ये स्टोरी हमारे एग्जाम से कैसे रिलेट करती है, व्हाई दिस रिलेट. आप अपने एग्जाम में अपना आइडिया नहीं देखते हो, आप देखते हो उसका सही आंसर क्या है. डिजाइन में देयर इज नो राइट आंसर, है ना. लेट्स टेक प्रशंसा आइडिया ओनली. आप बताओगे सेव वाटर के लिए आप क्या करोगे प्रशंसा, क्या होना चाहिए? एक जेनरिक आइडिया, पहला आइडिया क्या आता है, या दूसरा क्या करोगे आप, कुड यू प्लीज शेयर? कि एक आदमी ऐसे स्टार्व कर रहा है वाटर के लिए, एकदम मरा हुआ टाइप का थोड़ा, और मतलब एकदम डेजर्टेड एरिया में है और क्रॉल करते हुए, मतलब उसकी ऐसे सिचुएशन दिखाऊंगी कि वो एकदम उसको पानी आने नहीं मिल रहा है टाइप का. काफी डेड है सब, पूरा एरिया ही वैसा सा डेड सा, है ना. एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द फर्स्ट आइडिया, पहला आइडिया क्या होगा लोगों का? इन जनरल क्लास में अगर 30 लोग बैठे ऐसे वो हाथ में ऐसे ड्रॉप दिखाते हैं, हाथ में ड्रॉप दिखाना, करेक्ट, वो भी लोग करते हैं. पीपल डू दैट, वो ड्रॉप दिखाते हैं हाथों. And I don't believe that is wrong or right, but that is your average mark वाला आइडिया. तो आप कुछ भी वाटर ड्रॉप बनाओ, ड्रोन दिखाओ, ये करो. मैंने कई कुछ सैंपल आप लोगों को दिखाए भी थे, हाउ यू कैन डू इट द बेटर वन, और I'll make sure जो आपको कुछ लोग हेल्प भी करें उसके लिए. वेल, बट अगर ये एकदम से पोस्टर से लोगो फॉर्मेट में आएगा तब क्या करेंगे प्रशंसा, ये बताओ. आपको लोगो डिजाइन करना है कोई ऐसे ब्रांड के लिए, दो दे आर डूइंग अ कैंपेनिंग फॉर सेव वाटर. अब पोस्टर नहीं रहा, पोस्टर में चलो ठीक है, यू कैन क्रिएट अ सीन, कोई इंसान कहीं गिरा हुआ है डेड हालत में, या कोई बर्ड्स, कोई भी एनिमल, लाइक एनीवन, लाइक दैट सिचुएशन यू आर क्रिएटिंग समथिंग that will behind you are creating a scene that way. But if it's a logo format, तब क्या बनाओगे आप? You also need a time to think now, huh?
Take your time. Meanwhile, we'll go back to Trishana. आप बताओ Trishana. After that, I'll ask Stuti and Srinija. I can see you guys on my screen now. So Trishana, yes, what sir. is your initial idea? So for the logo, I एक mountain बनाऊंगी. Like the glacier is melting. So that in a very simplified manner. That's my first idea. You have to see what is the meaning of logo. That's what I asked so that I can explain you the logo. Stuti, what do you think? What is the meaning of logo? You are not audible, by the way. Am I audible now? Yes, you Yeah, are. sorry, my. Yeah, hi. So, the logo is just like a visual representation that's eye-catching, and it just gives the message clearly. Like, it's, you can say it's an emblem of a kind. So if it's for save water, you could probably just draw a tap where there's no water coming out of it or something of that sort. You guys are around the poster only still. That is how in exam they twist a bit, and that's what Nift says and college says. And frankly, I'm telling you, आप तैयारी मत करो. क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना, you are doing it throughout the year something. पूरे साल पोस्टर किया है, लोगो आ गया, तो वहां भी पोस्टर बना के आ जाओगे. And that's what I don't believe. जो आप कंप्यूटर सिस्टम की तरह पोस्टर सीखते रहो. What is the ideology of the logo? Prashansa, Srinija, Anushka, anyone. Why logo need to design? मान लो बताओ मैंने क्या बताया आपको? If you remember, the idea is the brand is that company is talking about save water. यहाँ पे save water का awareness का पोस्टर नहीं बनाना है. Company is talking about save water, right? So then what you will do it? Tell me. Sir, can I say an idea? Ellen, yeah, you are audible. I would probably like create an abstract form through the company's name itself. So I would create an abstract form, maybe a drop or something. But if it's an abstract form, I think it would be really cool, more than just a normal kind. Ellen, your idea is something good, but I'm not getting it. What is your understanding about the logo? If the company is about save water, so why the logo is something in abstract form, art form, whatever it is? Because it's supposed to be simple. It shouldn't be complicated, a logo. Okay, thank you. That's what I want to listen in. What do you think? Okay. If it would be great, Ellen, if you can join with video. Yeah, I think Trishana, you want to say something? Sir, a camel for the logo. Camel for the logo. My first question is still there. What is the logo is? Poster से logo में जो change करेंगे क्या होना चाहिए? What is the real idea of the logo? Logo is like simplified. It's not that colorful. It's not like the whole thing. And It's simple, and you get the idea of. You all are right, the whole but organization something else. I think Josna have want to say something. She want to join this discussion. Yeah, Josna. it should be memorable to and straightforward kind of. I mean, क्या होता है spotting light on that particular thing only. Yeah, okay. Am I audible? Yes, you are audible. It was lagging a bit, but now you are audible. So you're on mute. I am on mute, but you guys are not on mute. I was expecting the answer, like, you know. Anything else? Sir, I have a doubt. Yeah, Prashansa, tell me. If we make a blue drop, which will become very common, but if you are talking about a logo, that is the most simplified version of save water. But I don't want to make a blue drop in a logo. So hey, by the way, did you guys notice this year Meraki poster ka wo graphics? Remember that 2D graphics was simplified? No? Yes? Anyone? Can you recall? Remember? I think Stuti maybe. Yeah? Yeah?
रिम को याद होगा, राइट रिम? हाँ सर, काइंड ऑफ याद है। एंड डू यू रिमेम्बर द जर्नी? पोस्टर में कैसा था वो, ग्राफिक्स में कैसा था, बैकड्रॉप में कैसा था, द चेंजेस? हाँ सर। You would have answer of the all, like your problem right away if you would remember. Well, I will not make it more complicated. I'll make it first things. Whatever answer you guys have said talking about the logo, that was right. There's no doubt. Logo is logo. It's simplify होता है वो, easy होता है वो, आपको उसको depict करना होता है, that's signage. But the first idea of the logo is brand identity. जैसे प्रशंसा भैया की ब्रांड है, उनकी लोगो होगी तो वो ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में बात करेगी. And what is my along with my question, if you remember, question क्या पूछा था मैंने आपसे? The question was a brand who is talking about or organization who is talking about save water, है ना? Yes. तो अब पहले हाँ, तो if my idea is maybe वो क्या हिमालयाज आप पहुंच गए, if something is melting, ice cubes or somewhere ऐसे, तो ब्रांड आइडेंटिटी को कैसे ये शो करेगा? You are not very close to, you are away from there. मतलब आप somewhere you are talking about water save करो, that's giving a message of poster. Can you see the difference now? मतलब मेल्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, we should save the water. That is good enough when it comes to the poster, but वो ब्रांड आइडेंटिटी नहीं करेगी. If somebody who is talking about the brand and the logo save water, एक ब्रांड बात कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आप किसी ब्रांड के बारे में थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो. जब आप पोस्टर की बात करते हो, आर यू गाइस गेटिंग इट? व्हेन यू टॉक अबाउट द पोस्टर, तो आप एक सोशल मैसेज दे रहे हो, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो उसको. सोशल मैसेज की बात कर रहे हो. मान लो ऐसा हो गया, यू आर जस्ट बिकॉज यू ऑलवेज होल्ड द फोन, दिस यू कैन विजुअलाइज, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, फोन को हैंड में रखा, दूसरे फोन से जिस फिंगर को फोन को टिप करना है, ये फिंगर क्या हुआ, पूरा ड्राई हो गया. डेजर्ट वेजर्ट तो छोड़ो ना, इसे ड्राई कर दिया, इसमें क्रैक्स आ गए, ये इस बड़े बुरे हालत में है, इससे आप ये प्रेस ही नहीं कर सकते हो, ऐसे हालत में पहुंच गया. नथिंग इज फोन एंड दिस फिंगर, दैट मच ओनली यू आर टॉकिंग अबाउट सेव वाटर. वो भी पोस्टर बन जाएगा. समझ गया? वो जो इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर है, वाटर ही नहीं रहा इसमें, इस हालत में पहुंच गया, ये टिप नहीं होगा, बाकी चीजें छोड़ दो आप. सो आइडियाज कैन बी समथिंग. अब क्या होता है, आपको बनाना ये फिंगर और सेलफोन है, आप क्या करते हो, पूरा हैंड बनाते हो, पूरा इंसान बनाते हो पोस्टर के लिए. मतलब आई सी एंड आई फील लाइक why you guys are not clear with initial idea also, करना क्या है, आइडिया क्या है. so that is what missing into poster to logo. आपको बस एग्जाम में एक ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्वेश्चन समझ लेना है. if you will understand the question, और अपने किसी भी बेस्ट काम से, प्रशंसा में सबसे पहले मिलने आई थी बॉम्बे में, she was the first Bombay students, तभी जो है, अभी तो कई सारे क्लास में अभी भी होंगे कई लोग. हाँ, रिम उसके जस्ट नीचे काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है. यस, आई कैन सी शी इज रेजिंग द हैंड. शी इज आल्सो फ्रॉम बॉम्बे, बट आई मेट रिम कपल ऑफ टाइम ऑन दिस ऑनलाइन क्लासेस, बट हाँ, ऑफलाइन अभी तक हम नहीं मिले हैं. सो माय आइडिया इज, अगर आपको तभी भी याद हो, मैंने कहा था जो आपका बेस्ट वर्क ही एग्जाम में आपको करना होता है. व्हेन यू आर आस्किंग मी क्या एग्जाम में क्या करें, सो एनीथिंग, व्हाई आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ दिस फिंगर एंड फोन, क्योंकि मैंने क्या सोचा, मेरे पास यहाँ पे क्या है एग्जांपल देने के लिए, व्हाट आई हैव, and then I come up with something which is very different. So पहले initial concept समझना है. Whenever the poster come, the idea of the poster is to giving a message, social message. Whenever is the logo comes, the idea through logo is the brand identity. वो किसी के बारे में हो, कृष्णा नंद सिंह ब्रांड हो, इग्नाइट इंडिया ब्रांड हो, you know, रेनुस बाय गोविंद कुमार सिंह ब्रांड हो, प्रशंसा का ब्रांड हो, या भैया का ब्रांड हो, प्रशंसा है ना, किसी का ब्रांड हो, either you will redesign the logo, you are making a logo. लोगों का ये समझना पहले जरूर. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? आई वांट इक्वल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट, जितने उतने मैसेज. बहुत एफर्ट लगा के समझाया मैंने. यस, नो इन द चैट बॉक्स. उसके आगे मैं फिर बताऊंगा नेक्स्ट व्हाट. यस, सो यू गाइस हैव टू पुट दिस मच ऑफ द एफर्ट. ओ माय गॉड, सडनली आई सी सो मेनी मैसेज. सो आई विल वेट. देयर वाज 11 मैसेज, सो या, एवरीबॉडी इज राइटिंग गुड, क्विक. वेरी गुड. I have nothing to do, but I want to know जो ये समझ में आए. This two difference if you understand poster and logo, so life easy हो जाएगा. क्योंकि स्टाम्प तो समझ में आ जाता है, पोस्टर एंड लोगो में थोड़ा थिन लाइन है, स्टाम्प पे हम आएंगे. Yes. So where is rest of you?
Still, at least how many of you have to answer? 15, 10 or 15 people. There's a 43 unseen message in my chat box. कोई एक दो बारी नहीं लिखेगा, एक बारी लिखना है. So see, this many also, I don't mind. I'm a well-wisher for all of you, but look at here, because we haven't got the equal number of the message also in reply. That means at least 10 बच्चे 15 बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया. एग्जाम में सेम गलती करेंगे. So do not look at the number of the center. Center पे जो crowd होता है ना, वो भी देख के कई बार आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं. इतने लोग एग्जाम दे रहे, मेरा क्या होगा? That are just a crowd. Crowd is not always a crowd. Crowd is not always your competitor, so do not worry about them. जो क्लास में कौन क्या बना रहा है, you know, 4 मैसेज बढ़ गए ये बोलने के बाद, 4 लोगों ने और रिप्लाई कर दिया, शायद ये कल होना है. I got one more message. So I know I have so many things to share. It will never ending. I can take 1 week class only about to exam management. You know, that many year of the topic and things to discuss I have. So कोई भी टॉपिक अगर हम शुरू करेंगे वो कभी एंड नहीं होगा, ऐसा हो. बट या tomorrow session there are lot of things to share. आज के सेशन में अगला लेवल का ये मैं खत्म करूंगा. I will not take any one question. Prashansa का ही part is for the all of you. I will around the only I will discuss. So I'll come back to this part. 10 out of 10 या 10 out of 9.5 कैसे मिलेगा? एक दो टीचर भी पूछ रहे थे सर कैसे बोलते हो आप नंबर देने के लिए. देखो दो है, एक तो हाफ ऑफ द मार्क्स आउट ऑफ 10 5 लाना इजी है. यू कैन स्कोर 5. व्हाट यू नीड टू डू, सेव वाटर के लिए वाटर ड्रॉप बना के ऊपर सेव वाटर लिख दिया, नीचे आपने ये लिख दिया जो आप जो है वर्ल्ड में ये चाहते हो, लाइफ या लेट्स हैव अ बेटर लाइफ, ग्रीन वर्ल्ड, समथिंग XYZ, कुछ भी लिख गए आप. बस आपने तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, स्टिल यू विल गेट द कट ऑफ मार्क्स. दैट्स माय प्रॉमिस. If you are having in GAT also 50 to 60 marks and CAT में आपने 50 marks लिया है, cut up आ जाएगा. You all know that is how the cut up is from last 3 years. I do remember last 7 year cut up. वो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा. There was a some year when the cut up was 50 plus also. GAT में negative marking नहीं थी. Out of 80, 51 भी cut up हुआ है general का. You know, other are a bit less than general in compared to. There are, you know, the others OBC, SC, ST and EWS. Now you guys are aware about it because आपने फॉर्म भरा है. इससे पहले कई बच्चों को पता नहीं होगा ये सब क्या होता है. You are not aware about this reservation and like you know the difference. So that is there. So we'll discuss about all this. Now moving forward to 5 से आगे का नंबर कैसे होता है. So we say you need to focus on 4 things. And this is not on a blank idea. We have discussed with the same faculty जिन्होंने पहले पेपर चेक किया है निफ्ट में. Though they have experience of checking a paper from quite few years, और कई लोग अभी भी करते हैं, but I cannot share the name sources. कई बार पेरेंट्स पूछते हैं सर आप अच्छा ये बता दो वो क्या करेंगे. उसमें कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकते कि उनके पास जो पेपर जाता है उसमें नाम नहीं होता है. The exam has conducted by the third party. I will not take the name here. And then third party says that Nift को जो this is my requirement, this many of the faculty is required. And those number of the board 10 days 10 12 8 people board in Delhi Nift, they check the paper. तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो बॉम्बे में, आपका कॉपी बॉम्बे में चेक नहीं होगा. That's what you have to make your paper very neat and clean using the dry colors. I personally recommend drawing pencil color because I got many call asking me sir can I use this kind of pen. I don't even know the name. Nift से pass out हूँ मैं इतने साल के, but I even don't know because the new range of the product always comes in a market. So please don't ask me such questions. Drawing pencil is more than enough and sufficient. Rim a week before and now you can ask the rim the level of her work, how it was improved because she learned how to do it, right rim? एक हफ्ते पहले आपको भी लगता था नहीं बनेगा सर? हाँ बहुत इम्प्रूव हुआ है. तो अब आपको लग रहा है तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बना के आ पाओगे? हाँ सर, सबसे मेन तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया. अच्छा हो गया. और ये कोई आशीर्वाद नहीं है, आपने सीखा है अभी इधर 2-3 दिन में ना. ऐसा नहीं है 3 दिन पहले बोला सुबह उठ के 6 बजे योगा करो, 5 मिनट ध्यान करो और हो जाएगा. There is a certain techniques. If anyone who is joining us through YouTube or joining us here in the class, कोई hesitation मत रखो because I know we are not able to meet lot of you because of this pandemic time. तो आप बताओगे तो हम कर सकते हैं. Not certain extent, जिस extent तक हो सकता है जरूर हम करेंगे. हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है तो नहीं इसे करना है. हार्डली मैटर जो उसमें क्या एफर्ट लगना है. तो मेरा कंसर्न यही रहेगा. तो आप शेयर करिए, हम जरूर बताएंगे.
आई नो अ रिम बिकॉज वो और उनकी मामा एक्टिवली बताती रहती ये हुआ ऐसे हो गया, and I don't know few of your problem because you don't share, so you have to share with me, Gaurav sir, Shruti ma'am, Navin sir, Vijayan sir, Kunal sir, जिसके भी कांटेक्ट में हो आप, राइट? There are many more other people you may know in the team, है ना, कई सारे लोग हैं, तो आप शेयर करिए, वो जरूर हेल्प करेंगे और रिलेटेड पर्सन को वो इन्फॉर्म करेंगे. नाउ 5 से 6 7 8 9 10 कैसे आएगा ड्राइंग में? लेट्स मूव टू द 6. So there are 4 things which you need to take care. One is the basic layout बना लिया, उस layout में कहा क्या बनाने वाले हो. Second is your ideas. जैसे अभी एक दो लोगों को मैंने देखा, रिम थी, एक दो लोगों या you started clapping, अच्छा नहीं, अच्छा फिंगर को वैसे ड्राई दिखाएंगे. But this is idea is that doesn't mean you'll go beyond the topic. बनाना सेव वाटर है और आप बना रहे हो कुछ और. The idea of the finger also is क्योंकि ये particular part में there are 70% is water only, जो आपको दिख नहीं रहा है. तो वाटर अगर पूरा यहां से निकाल दिया जाए, ब्लड में भी वाटर होता है, राइट? इफ यू विल गो फॉर टेस्ट एंड एवरीथिंग, वाटर खत्म कर दिया जाए तो ये कैसा होगा? जस्ट इमेजिन. द वन थिंग इज वी ऑल नो वाटर पीने से क्या होता है, स्किन क्लीन होता है, डॉक्टर बोलते हैं पियो, यू मेंटेन द गुड हेल्थ. सबसे पहले क्या होगा, इसका कलर बेकार हो जाएगा, एकदम डार्क ड्राई डेड हो जाएगा. ये कई लोग बोलते हैं ना, अरे ऐसा क्यों दिखता है, ये बीमार है क्या, पानी नहीं पीता है, दवा नहीं खाता है, खाना नहीं खाता है. So that was the idea. Concept is still there, very close to water. या कोई और आइडिया, तो आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है, कॉन्सेप्ट ही आपको अलग करेगा. तो Prashansa was asking me, सर एक के लिए तो टाइम होता है, 3 के लिए नहीं होता. So next part, another part we'll discuss about that. So पहले पार्ट में हम आते हैं. The first part of here is, so 6 और 7 नंबर आपके एग्जीक्यूशंस और इससे नहीं, कॉन्सेप्ट से आएंगे. The concept should be very very strong, your own. और अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? कॉन्सेप्ट आएगा व्हेन यू विल थिंक अबाउट मिनिमम थिंग्स व्हिच इज अवेलेबल अराउंड. मेरे को तो ऐसे ही आता है, लाइक व्हेन आई सी, अच्छा यहाँ पे सब कुछ है, अब मुझे कैसे दिखाना है. तो मैंने देखा अच्छा फोन है, ये है तो ऐसे दिखाते हैं, या और कैसे है, जैसे कि अब मेरा ये वॉलेट यहाँ पे रखा हुआ, तो आई विल शो वाटर ड्रॉप इज गोइंग इनसाइड ऑफ दिस. ये मेरा कॉन्सेप्ट होगा, वेरी सिंपल. पैसे इसमें रखते हैं, पैसे जो है वो इंपॉर्टेंस है आपके लिए, तो वाटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, प्लीज सेव द वाटर, डोंट वेस्ट इट. ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल से बातें आती है मेरे दिमाग में. तो आपको इतना ही सिंपल है, आपके आसपास ही देखना है, बहुत दूर की दुनिया में नहीं देखना है. ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे आपको, तो आप क्या होता है, आपके दिमाग में वो बना रहता है, सेव वाटर के लिए तो ग्लोब बनाना है, या वाटर ड्रॉप बनाना है, या मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है. तो प्रशंसा ने बताया नहीं बहुत बड़ा, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ. इफ समबडी कैन मैनेज, डू इट. आई एम नॉट टेलिंग यू. जो आपने वो डेजर्ट बनाओगे पूरे में, फिर दिखाओगे जो एक बंदा ऐसे है, नंबर मिलेगा उसमें. आइडिया इज वेरी नाइस, देयर इज नो डाउट. आई एम नॉट सेइंग दैट मैं जो बता रहा हूं वही है. डिजाइन में वेरी बेसिक, सेव वाटर, एक ड्रॉप बनाया, वाटर ड्रॉप, उसमें क्रैक दिखाया, वो भी सही है. बेसिक्स, एवरीथिंग इज गुड. मैं वाटर ड्रॉप में पहले बताता था जो वो स्टिच हो रहा है, मतलब somebody is trying to heal the water, क्योंकि वाटर बहुत पोल्यूट हो रहा है, यू नो, ऐसे करके, वो भी बहुत इजी है. वाटर ड्रॉप पे बीच में लाइन किया और उसको स्टिच, नीडल्स दिखाना और ये सब, यू नो, थ्रेड दिखाना. सो द आइडिया विल ऐड द 2 मार्क्स इमीडिएटली. बहुत ही गंदा ड्राइंग है, 5 नंबर वाला ड्राइंग है. कॉन्सेप्ट अच्छा है तो 7 नंबर आ जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट. अब क्या है, कई लोग बहुत ही अच्छा फॉन्ट बनाते हैं. मैं कोई वर्ड्स में अब नहीं बताऊंगा. आज के क्लास में विल नॉट डिस्कस अबाउट क्रिएटिविटी, योर आइडियाज, कॉन्सेप्ट. ये सब चीजें बहुत दिक्कत कर जाती है, आप समझते नहीं हो और कुछ और करने लगते हो. दैट मींस समथिंग व्हिच रिलेट द प्रोडक्ट एंड से दैट ओ वाओ आई लाइक इट. मैं यहीं से 2 चीजें दिखाई ना आपको, 2 एग्जांपल. सो दैट विल ऐड 5 to 7 इमीडिएटली. 6.5 7 कितना भी बुरा फैकल्टी हुआ तो वो नंबर देंगे. वो एक और नंबर कैसे आएगा, when your denting painting is good. That means आप अगर कोई आप कैप्शन डाल रहे हो तो सेव वाटर की जगह you are using your own caption, something which is more relevant, making more sense and going with your elements. Element is your cell phone, my finger, or maybe my purse or something else which I am talking about. Save water. I am taking very easy topic, save water. उसमें 2 बच्चों से पूछा, वो blank हो गए, क्या बनाऊं, क्योंकि इजी टॉपिक इज ऑलवेज डिफिकल्ट, क्योंकि आपको लगता है सब तो बहुत सिंपल सिंपल बना रहे हैं. इफ टॉपिक इज बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट, तब आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने तैयारी करी है. एक ड्रॉबैक होता है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको बताया जाता है अक्सर आपको अपने कॉन्सेप्ट से बनाना है, तो यू गॉट बॉदर्ड मोर अबाउट अदर्स.
बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो प्लीज माय रिक्वेस्ट इज, इफ यू थिंक योर कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, हर एक दूसरा बंदा यही बनाना, तो भी आप वही बनाओ। आप क्या कर सकते हो, अच्छा सा कैप्शन ऐड कर सकते हो, नीचे कुछ यो कर सकते हो कि आप नया करने जाओगे ना, like suppose if I know how to drive Activa and I will try to drive direct plane or jet, I cannot, तो आप कुछ अलग करने जाओगे, वो नहीं होगा आपसे। तो work around your strength in the exam, do not go beyond. In this particular things I will discuss later. Now 7 से 8 हो गया, किसी को प्रॉब्लम इसमें? How we will get 8 marks? मतलब आपका कैप्शन, राइट अप, बैकग्राउंड कलर में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, हियर यू कैन अवॉइड द पेंसिल कलर। बड़ा सा स्पेस होता है, एलिमेंट बहुत छोटा लिया, अब आप बैकग्राउंड में फिलर करने में 20 मिनट लग रहे हैं। इधर यू कैन होल्ड द पेंसिल इन दिस वे, कुणाल ने आपको बताया होगा रिंग तिरछा, और वैसे करके आप भर सकते हो। दूसरा तरीका है, यू कैन यूज द पेस्टल कलर अ बिट इन बैकग्राउंड, और कलर पेंसिल से थोड़ा उसमें ये कर लो आप, यस या यू कैन होल्ड लाइक दैट एंड यू कैन डू इट। तो आप जब तिरछा करोगे तो ऑब्वियसली वो बड़ा एरिया कवर करेगा। इफ आई वुड हैव सम पेंसिल हियर, वेरी सिंपल, आप स्ट्रेट भरोगे तो ऐसे that I've been practicing before, like for like 1 month I've been trying to practice like that so that my shape good. So when you are doing it, so you can easily fill the color. There's one thing which comes in a mind, तो कई लोग बोलते हैं बहुत टाइम लग जाता है पोस्टर में और फिल कलर करने में बैकग्राउंड वाला। So background के लिए नहीं, so now concept it takes me 5 minutes to do one single color for a background. Oh, nice. 1.5. Yeah. Now how I will score 9 and 10? 8 तक तो आ गए, 9 10 कैसे होगा? So 9 comes something which come with your presence, uniqueness, balance, proper, मतलब वो proper balance लगे, जैसे कि luckily I have something here, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे अभी, I don't know, is it visible? दिख रहा है? Yes sir. इतना बड़ा स्क्रीन है, मुझे पता नहीं चल रहा है, it's quite big, so I'm not able to. तो इसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट्स है, उसका सपोर्टिव एलिमेंट है ये, तो आपके यहाँ जो लेआउट लिया हुआ है, दिस लेआउट इज आल्सो डिफरेंट। देखो सिंपल सा लेआउट लिया हुआ है, ये लाइंस यहाँ से आ रहे हैं, आई कैन सी, फिर यहाँ एक लाइंस है यहाँ। तो अब सोचो, आपने कभी ऐसे सोचा नहीं, बाकी लोग क्या करेंगे, बॉक्स में यहाँ सेंटर में बनाएंगे, लाइन में नीचे कैप्शन लिखेंगे, ऊपर एक पंच लाइन देंगे, आपने वही सीखा अभी तक। तो आपका कुछ अगर लेआउटिंग प्लेसिंग भी अलग होगा, डिफरेंट होगा। देखो अब यहाँ पे आप पोस्टर के लिए यूज कर सकते हो ऐसे लेआउट को, फ्लायर के लिए, एंड प्लीज जस्ट डू नॉट कॉपी दिस वन ओनली। मेरे पास है, आपके घर में भी ऐसे मैगजीन, न्यूज़पेपर में बहुत सारे लेआउट होंगे। कीप 2-3 लेआउट इन द माइंड, दैट्स इट। डू नॉट एक्सप्लोर 100 ऑफ द लेआउट। ये लेआउट किसी के लिए बना रहे हो, किसी भी टॉपिक के लिए आप बना रहे हो, तो भी ये सही होगा, राइट? व्हाट टॉपिक इज, सो थोड़ा एक लेआउटिंग पे ध्यान देना है, which normally we don't bother, सब एक ही लेआउट पे काम करते हैं, टॉपिक कैसा भी हो, and then overall balance। आगे का नंबर जो एक नंबर, वो भगवान भरोसे है। टीचर को पसंद आ गया तो मिलेगा, नहीं पसंद आया तो नहीं, वो डिपेंड करता है मूड पे। सुबह अगर ब्रेकफास्ट करके नहीं आया और पता है आज 1000 नंबर देना 1000 लोगों को, डू नॉट इमेजिन दे गिव half an hour to read your copy, no, nobody, 2 minutes। I should not comment on all this, हाँ, नहीं तो मेरे ऊपर so leave this particular topic, edit it, it's a live session, but I would like to, I'm not supposed to comment on this, but I would suggest to do not think जो कोई आधे घंटे देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग टाइम देते हो, आइडियली आपके बुक में 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं चेक करने में, क्योंकि एक दिन में कई बार नंबर जो बहुत ह्यूज होता है, which will be not live YouTube session, मैं उसके बारे में प्रैक्टिकली फिर बात करूंगा, all this जो क्या होता है। So just keep in mind whatever you are writing it in the concept, caption, punchline, बहुत ही neat, clear और ये हो, जो आपका काम देख के जहां यूनिक लगा, keep things adding। पहले देखा, ओ वाओ, नाइस लेआउट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ऐसे अच्छा लग रहा है, फिर कैप्शन देखा, ओ दिस इज आल्सो गोइंग, देन व्हेन दे स्टार्टेड रीडिंग 1 or 2 लाइन पढ़ा, अरे वाह बहुत सपोर्टिव जा रहा है, यू मे गेट आउट ऑफ 10 9.59। ऐसे समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप सब अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं मेरा स्टोर बाहर से देखने में वाओ व्हाइट बहुत बढ़िया, अंदर गया मेरे काम का जो कस्टमर है उसके काम का कपड़ा ही नहीं है, या हम बनाते ही नहीं है, राइट? जैसे मेरे स्टोर में किड्स वेयर बहुत कम होंगे, बट वी डू किड्स वेयर, तो अगर किसी को देखना है तो वहां देखने के लिए कुछ नहीं है, कस्टम बनवाना है तो हम बना देंगे। मेंस वुमेन्स वेयर देयर इज अ डिसेंट नंबर ऑफ द क्लोथ्स वी हैव। तो ये चीजें समझना जरूरी है, तो आपको कैसे फ्लो में उनको ले जाना है। क्लियर? टिल हियर इट इज क्लियर, राइट? या Trishana, is this clear now? Yes sir.
or anyone who is very average. If somebody good in drawing, do not feel bad. जो मेरा बढ़िया है तो मुझे नंबर कम आएगा. Or somebody who is very average in a drawing, they can also score very good following this method. जिसका बढ़िया उसका तो होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपके लिए एडिशन है. But if you are not good in, do not worry, do not get worry about next person who is sitting to you. I would like to show you something. Behind ये देख रहे हो आप, ये वाली पिक्चर on your screen, this one, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इन लोगों का फोटो. Yes, sir. Yes. फोटो नहीं, वो हैंड स्केच किया हुआ है. And he didn't clear NID, NIFT, any of the exams. Which college he is in and who is he? I will not talk much about this. So if you are very much artistic, I had a lot of respect for this student. I know he will do very good in life. But I always give the example. The reason is there is a type of brain. If you are very much artistic, also you will not score good in the exam. क्योंकि आपके काम में आर्ट दिख जाएगा और आर्टिस्ट नहीं चाहिए उनको. अब इसका मतलब ये नहीं है जिनका ड्राइंग बहुत अच्छा है वो गंदा बना के आना एग्जाम में. और आपने बताया था, and especially people who are watching on YouTube, please do not do such mistake. तो आपने तो बोला था आर्टिस्टिक नहीं बना के आना है. मैंने बताया आर्टिस्टिक नहीं, बट क्या बना के आना है. So like suppose you are making this one, how artistic you can make, like in this one wallet if you are putting like okay, water box, water, आपका ड्राइंग अच्छा तो आप क्या कर सकते हो, स्टिच डिटेलिंग बढ़िया कर सकते हो, लेदर टेक्सचर अचीव कर सकते हो, आप इसकी शेडिंग अच्छे से कर सकते हो, वाटर ड्रॉप हाफ अंदर रहेगा हाफ बाहर, वो जाता हुआ दिखेगा ऐसे करके, तो आप उसे और लाइव बना सकते हो. और इफ यू आर वेरी गुड इन लाइक दैट, तो आप ऐसे यहाँ तक हैंड भी बना दो साथ में, जो कि फॉर अ डिस्प्ले, जो अच्छा इसके साथ साथ ये भी डिस्प्ले में आएगा ऐसे. सो ऑल दिस थिंग, बट alert, this is for a people though they can really execute in within half an hour. If you cannot, you are supposed to make a simple layout of this. Water इसके अंदर जा रहा है, इसके ऊपर में आपका कैप्शन आ रहा है, और you are talking about that layout. Denting painting जो मैंने कहा, that means आपका layout अलग होगा, आपका कैप्शन के लिए अच्छा सा प्लेसमेंट होगा, कैप्शन अच्छा होगा. There is a 2-3 way to have a good food, right? एक if you are a chicken lover, तो आपने बहुत सारा चिकन लिया KFC से और खाने बैठ गए. और इफ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी, तो आपने क्या किया, एक पूरा वेज थाली लिया. देयर आर मल्टीपल्स आइटम, स्वीट्स भी है, ये भी है, और आप सब कुछ खाने का मजा ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा खा रहे हो. तो आप दो तरीका है, या तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, एक एलिमेंट को बहुत ही अच्छे से आपने बनाया, डिटेलिंग के साथ कैप्शन डाला, स्टिल यू विल गेट डिसेंट मार्क्स, बैकग्राउंड वगैरह करा. नहीं तो आप ये 4 लेवल का प्रोसेस फॉलो करो, यू विल गेट अ गुड मार्क्स. स्टिल 8 और 9, 8 or 9, that means 80% marks. Trust me, you will get Delhi, Bangalore, Bombay. And none of the student whose marks I'm challenging here, if anyone is score is right now, beat anyone across the India. 80 plus drawing में होगा, गैट में 30-40 लाने के बाद भी उतना तो आप ले ही आओगे. I'm sure at least if you are attending class from so many days, you will get top centers. I do not believe in top, but still this city, metro city, I could say that would be better. Whichever you want. Those city obviously will get in top departments. Or 80 plus, you may get single digit rank also, managing a better gap and then situation test. That's there. So after exam, जितने लोगों का बोर्ड वगैरह नहीं है, मई जून में बोर्ड है, उनको भी मैं सिचुएशन टेस्ट का भी बहुत ही जल्दी शुरू करवा दूंगा पेपर क्लासेस. Yeah, so that also will start. So now very true. So that's what all the experience based sessions this is. So let's move from the next section of it. I do not want to make this is fun based class, it should be information based. So आपका ये part complete हो गया. Prashansa, you are clear about it now? Priya, yes, other of you, right? This time you guys do not need to write the message, you can give me thumbs up ऐसे, या smiley जो भी देना है ऐसे कुछ भी. हाँ, yeah, good. Yeah, you can participate, unmute and say yeah, great. I do not want to count the message once again. कितने लोग सही में बोल रहे हैं. Now next part of it, if the 3 question is there in the exam, this I will discuss today only so that you can practice a one set of CAT paper. Please practice only for CAT now, है ना. और कल जो सेशन होगा आफ्टरनून का, that is more dedicated to all about the exam management और strategy planning ये सब. तो आज का जो अगला सेशन इससे रिलेटेड है, which Prashansa asked, that is the last. Then I will take your questions. I mean your work which you will share right now.
So I hope Rim, you are ready with those words. Student काम बाकी ग्रुप में शेयर कर दिया? हाँ जी. Sir, Krishna is the one who does for batch 4. Nobody have sent anything. Exactly, sir. और सब लोग everybody want informed beforehand, so nobody's prepared anything and they're all not So sending. you guys know it's my class where we will discuss the papers, so you should have papers. It's okay, your batch. Very nice story. Yeah. Sir, but there is there in the group, huh? Sir, I have a personal doubt that is in geometrical shapes. I'm very geometrical shapes question is not that great for me. So I was asking if you have any tips. I'll come there. First, let's complete this chapter. Geometrical based questions. Again, we'll discuss for the questions, what other students think, their opinion, because that helps a lot, and then we'll come. Now, there is 3 questions in CAT. How to manage the question. Sometimes you are stick with the idea, I will make question number 1. मतलब कहाँ लिखा हुआ, किस बुक में लिखा हुआ question number 1 ही बनाना एग्जाम में सबसे पहले. So I have seen many students, saying that sir half an hour तो सोचने में लग गया क्या बनाऊं question number 1 के. Please go with any of the question 1, 2, 3. And I know if you are preparing from so long, out of 3 at least you know the 1 questions जो आपको क्या करना है उसमें. And I said, like I was giving you example which is on this table, whatever I have randomly उठाया और आपको दिखाया, वैसे ही throughout the year आपने जो भी काम करा है ना. So this is like a war, take it as a war and you are a soldier. आपके जितने भी अच्छे काम है, जो चीजें आपको आती है, that means if you are good in abstract, geometrical, real, जैसे Rim is not good in geometrical. So you may feel bad, okay, geometrical में color कैसे डालूं, problem होता है. So whatever you are good at, those work only you are supposed to do it in the exam. So I will take example of Prashansa only. Let's see if let it be the topics. I think first topic दे देगा. Yeah, topics, 3 topics. I'll take very simple topic. 1, एक poster आया है. I will not keep composition भी रख लेते हैं. 4 question रख लेते हैं, not 3, 4 question. एक poster बनाना है, एक composition बनाना है. Or the third one is we have a one. Why I take 4? I'll tell you. Third one I will take color. और एक step drawing दिया है. That means 4 step drawing. ऐसा exam में नहीं होता. I will repeat. Do not take his ideal situation. Exam में 3 ही आएंगे. So step drawing is like suppose you have to do something in a step, plane landing or something. Sometimes storyboarding. So उसमें थोड़ा करना होता है. इसलिए I'm keeping 1 step drawing, 1 composition, 8 posters और एक category the color. कलर भरो, कलर मोशन से दिखाओ, इमोशन से दिखाओ, या ज्योमेट्रिक बॉक्स अपनी पर्सनालिटी को ज्योमेट्रिक बॉक्स में दिखा के फिर उसमें कलर डालो. However the way color come, these are the 4 and type category questions normally comes in the exam. सोचो ये 4 कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, राइट? मतलब 4 में से 3 आ गया. यही 4-5 कैटेगरी है जिसमें से 3 आना ही आना है. बियॉन्ड दिस नथिंग विल कम. अब आप बोलोगे सर वो तो ब्रोशर आ गया था बनाने के लिए. व्हाट इज ब्रोशर इज ऑल अबाउट. और लोगो आ गया और पोस्टर की जगह पे स्टैम्प्स आ गया. वो हमने पहले डिस्कस कर रखा है. जो स्टैम्प दैट मींस जस्ट ऐड ऑन 500 इंडिया भारत लिख दो, पोस्टर स्टैम्प बन गया. आपको बाकी कंप्लीट पोस्टर बनाना है. बट डू नॉट मिस्टेक पोस्टर एंड पोस्टर एंड स्टैम्प में वो डिफरेंस होता है. डू नॉट मिस्टेक बिटवीन पोस्टर एंड लोगो. क्योंकि मैंने सुना है हर एक लोगो बोलते हैं पोस्टर और लोगो में बस इतना ही डिफरेंस होता है. लोगो थोड़ा सिंपल होगा. The entire idea is different. Yeah, it looks simple. That is quite different. So अब आप वो मिस्टेक नहीं करोगे. जिन्होंने शुरू में क्लास ज्वाइन नहीं करा है, the video will be live on YouTube. आप जाके देख लेना. What is the difference between poster and logo? आप लोग क्लियर हो? जो लोग यहाँ पे हैं, there is no doubt in poster, logo, right? And stamp, you know what to do. So now move further. Let's take Prashansa idea. Prashansa, आप क्या करोगे अगर ये 4 क्वेश्चन है? So what you will do it? मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं बताया क्वेश्चन क्या आया है. आई जस्ट गिवन दिस इज द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन. तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? कलर वाला में उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. कलर पिक करोगे, आप बनाना शुरू करोगे. अगर उसमें बॉक्सेस ग्रिड भी बने हुए तो और आई डोंट नो व्हाई पीपल वांट टू मेक देयर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड. कलर में अगर ग्रिड बना हुआ ऑलरेडी, नाउ यू वांट टू मेक सम शेप इनसाइड ऑफ इट. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम्स. तो सब थोड़ा बनाते हैं उसमें, बढ़िया से बनाते हैं. Hey, you have to make other question also. They have given you the grid. As per the mood, fill the color, leave it. Not required.
ऐसा नहीं आप उसमें मछली और फ्लावर और ये बनाओगे तो एक्स्ट्रा नंबर है। ज्योमेट्रिक में वो बनाने में भी बहुत हेल आउट ऑफ लाइक यू हैव टू पुट द एफर्ट, सो व्हाई यू हैव टू डू दिस? मत करना प्लीज, आप बस कलर डिसाइड करके भरना। चलो ठीक है, आप कलर से शुरू करोगे। नाउ आई वांट टू नो फ्यू क्वेश्चंस सो दैट आई कैन सजेस्ट यू। आपको क्या लगता है कलर में आउट ऑफ 10 वेयर यू विल रेट योरसेल्फ, कितना अच्छा है? 7 to 8. Composition 7. Okay. Now poster Same. मतलब 7 8 वैसे ही। 7 8 ओके। स्टेप ड्राइंग आपने वो भी प्रैक्टिस किया होगा एनआईडीएस सब के लिए। स्टेप ड्राइंग थोड़ा कम आई वुड से। Well, so step drawing is something which comes आपको थोड़ा उसमें लग रहा है जो अभी प्रैक्टिस में नहीं है। हाँ मतलब एक चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है तो उसके कारण थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। स्टोरी बोर्डिंग मान लो 5वां क्वेश्चन भी है, स्टोरी बोर्डिंग या कुछ वैसा कैरेक्टर डिजाइन, टी-शर्ट डिजाइन, मैं सबको सेम ही करता हूँ, ऐसे हो गया। क्योंकि टी-शर्ट में भी ग्राफिक्स बनाना है, स्टोरी में थोड़ा छोटा एलिमेंट्स ऐसे ही बड़ा सा ही होगा, पर उसमें सोचने में भी थोड़ा टाइम लगता है स्टोरी बोर्डिंग में। हाँ टाइम लगेगा। अच्छा तो अब यहाँ पे ये सब देखना है, स्टोरी बोर्डिंग सोचने में टाइम लगेगा, तो आप कलर करते हुए क्या कर सकते हो, स्टोरी बोर्डिंग का प्लान कर सकते हो। द क्वेश्चन इज कलर एंड स्टोरी बोर्डिंग। आपको देखना है, जैसे खाना आता है ना सामने, आप देखते हो क्या क्या खाने में, मीठा है, थोड़ा स्पाइसी भी है, राइस एंड रोटी हो, तो आप प्लान करते हो पहले क्या खाना, उसके बाद कौन सा खाना, उसके बाद खाना। मैं बोल रहा हूँ इसलिए यू नो इट्स काइंड ऑफ सामने कुछ खाते नहीं है तो अभी वो ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप। नोबडी हैड समथिंग लाइक यू नो आफ्टर 2-3 बजे के बाद खाया नहीं होगा, सो यू मे रिलेट बेटर। तो ये चीजें वहां पे होगी, समझ रहे हो आप बात? तो आपको क्या करना है, कलर करना है, कलर के बीच में स्टोरी बोर्डिंग की प्लानिंग करनी है, उसके लिए हमें क्या बनाना है। सो you the same time you will not bother about the color, जो अच्छा नहीं, कुछ फॉर्म भी बना ले इसमें, ये खराब तो नहीं हो रहा है, बेकार तो नहीं हो रहा है, कैसा बन रहा है, क्या बनेगा, क्योंकि दिमाग तो शांति से बैठना नहीं उसे, आपको बताते रहना, कुछ ना कुछ सजेशन बैकएंड से आता रहेगा। So if you have some other work to do, that means while doing the color, if you are thinking about जो स्टोरी बोर्डिंग में क्या करना है वो टेंशन है, तो आप बीच बीच में जो आइडिया आएगा उसे बैकएंड में कर सकते हो, राइट प्रशंसा? So I'm taking a live example over here so that you know it will help you. Maybe someone else also want, they can discuss with me. मैं क्वेश्चन डिस्कशन पे बाद में आऊंगा। So frankly speaking, that does not work for me. Like one more thing, it may not work for everyone. None of the situation is ideal in the world. क्योंकि हर एक कंट्री में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। कई सारी कंट्री यहाँ भी बहुत कम घंटों के लिए रात होती भी है, कई सारी जगह जहाँ की सुबह बहुत कम टाइम के लिए होती है। So everything is designed and natural, everyone, like suppose I cannot write perfectly from both of my hand, but I can write from both hands. So it's like even a प्रशंसा होता है, मैं दोनों हाथ से लिख के दिखाओ आप मुझे। You know, day one she like everything she want with example, तो लिख के दिखाओ तब मैं बिलीव करूँगी। Anyway, आपको कॉलेज में भी दोनों हैंड से ड्राइंग करना होगा, थोड़ा बहुत वो भी करवाएंगे। मेरे टीचर को भी डिफरेंस समझ में नहीं आता था कई बार लाइंस वगैरह में, कहता ये कैसे किया। I finally learned understood why I need to start writing from left hand because of my right hand injury. Cool, nice. So that is what the idea is here. We need to understand if you are doing something or that's what I do not believe. I'm telling you, do not go for excess information. सारे information ideal नहीं होंगे आपके लिए. That's why I keep telling, take an individual mentor if required. Any one of you can contact us. और आप में से जितने लोगों को लगता है नहीं और टाइम देना, हम देंगे. But the first important, I'll again repeat the few things. Then there maybe you will start soon. Navin sir class for aptitude. Then I'll come back. अगर आपके पास काम है, तब तक में आप लोग जमा कर सकते हो in CR group and places, so that we can discuss those work again. I don't mind to continue till 11, 12, whatever time you guys are comfortable, but not 2 a.m. because you need to sleep also before the exam. And do not attend such sessions which is like, you know, or maybe do not practice. It's not a healthy practice overnight practicing 1 day 2 days before the exam, because बहुत ही natural है, weather भी change हो रहा है, you may get fever, you may get cold, cough, all this. So avoid all this situation
makes sure another 2 days you should sleep on time. तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे सेशन को ऑन टाइम by 11 खत्म करने का, है ना, क्योंकि कई लोग देख भी रहे हैं. So please take care of your health. That is the most important thing now, and we all know the value of it. नहीं तो पहले हमें लगता था अच्छा नहीं, पहले तो काम करना है, हेल्थ बाद में आएगा. So health is important. Well, so moving forward to this particular section, anyone having any question right now? Quickly बताओ जल्दी से. Sir, me Anshika. Quick, क्योंकि मुझे प्रशंसा से भी टीचर करवानी है, चारों क्वेश्चन बनवानी है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में कहीं बाउंस करके नया क्वेश्चन नहीं. यस, हियर अंशिका टेल मी. सर लास्ट कैट पेपर में एक डाउट था, जैसे एक पॉपुलर आर्ट कल्चर का आया था क्वेश्चन, तो मैंने पॉपुलर को पॉप नहीं समझा था. मैंने पॉपुलर आर्ट कल्चर को सिर्फ मॉडर्न की तरह से मतलब कल्चरली दिखाया था. तो सर ने कहा कि यहाँ पॉपुलर पॉप आर्ट है. ओके, तो मैं बस वही मुझे क्वेश्चन उतना क्लियरली समझ में नहीं आया था, क्योंकि पॉपुलर कल्चर था. तो ऐसा क्वेश्चन मतलब क्लास एग्जाम में आएगा तो क्या करूंगी? मैंने बताया था, मैंने 4-5 बार एग्जाम दिया अपने लाइफ में निफ्ट का शुरू में. तो अभी एक बार क्या हुआ था मेरे साथ अंशिका, फॉर ऑल ऑफ यू, मुझे ना एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाने की आदत हो गई. कंपोजिशन पोस्टर क्या था, हाँ, पोस्टर बनाने की आदत हो गई थी, जिसमें कि बड़ा सा बोर्ड होता था, बोर्ड पे मैसेज लिखा होता था, देन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन अराउंड, एक पेड़ पे वो बोर्ड लगा होता था, लोग बात करते रहते थे. और क्वेश्चन में आया नहीं पोस्टर उस साल, एक स्टाम्प आया, एक कंपोजिशन आया. तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा करा था इसलिए बताओ, मैंने वो पेड़ बनाया, उसी पेड़ पे बोर्ड लगाए, बोर्ड के नीचे में एक आदमी को बैठा दिया, क्योंकि वो था ना सोशल अवेयरनेस पे कंपोजिशन बनाना था. तो मैंने कहा ग्राम पंचायत लगा हुआ है वहां पे, पेड़ के नीचे पे वो ऐसे राउंड वाला, ऐसे 2 लाइन खींचना, ऐसे राउंड बन जाएगा पेड़ के पास में, राइट. वहां पे कोई बंदा बैठा हुआ है और पीछे बड़ा सारा क्राउड है. तो स्टोरी बिल्ड हो गई. उसके पीछे माउंटेन ऐसे ऐसे 2-3 बारी बना दो, माउंटेन भी बन गया. ठीक है, माउंटेन में ऐसे ना ऐसे बनाना होता है, गांव में तो और इजी है. गांव बनाना ज्यादा इजी है शहर से. शहर के लिए तो आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लोगे, ढेर सारा ज्योमेट्रिकल बनाओगे, बहुत छोटा बड़ा, और फिर वो बनेगा क्या, एंड ऑफ द डे ओनली बिल्डिंग. गांव में क्या है, बहुत ही इजी है. कहीं पे बैल डाल दिया, कहीं पे डॉग डाल दिया, कहीं पे कुछ और, कहीं पे 2 चिड़िया ऐसे बनानी है, उड़ रही है आकाश में. अब उसकी डिटेलिंग तो करनी नहीं है आपको, ऐसे ऐसे बस लाइन खींचना है, बन गया. 2 वर्ड काउंट हो गया, एलिमेंट भी काउंट हो गया आपका, तो आपने बना दिया. तो आप जब चीजों को सोचते तो इजी होता है. अब ये क्या हुआ, मेरा पोस्टर कंपोजिशन में कन्वर्ट हो गया. उस बैनर में मैंने मैसेज डाल दिया. आई थिंक वोटिंग था, 2014-15 की बात है. आप बोलोगे तभी आप एग्जाम क्यों दे रहे थे, मैं निफ्ट में था तभी, बट जस्ट फॉर माय एक्सपीरियंस, 23 ईयर नहीं हुआ तो उसका बेनिफिट ले रहा था, मैं एग्जाम दे रहा था बार बार. ओके, तो उस पेपर में, उसमें बोर्ड में फिर मैंने मैसेज लिख दिया ऐसे, वो वाला, वोटिंग करो आप. वो जो भी वोटिंग के लिए तभी जो भी माइंड में आया होगा, अभी वो कैप्शन याद नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली. सो व्हाट इज द क्वेश्चन इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट. वही हम अभी प्रशंसा के साथ डिस्कस कर रहे थे. द वे यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन इज अगेन मैटर. आपके स्ट्रेंथ के अराउंड ही काम करो आप. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन होगा 3 में से एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है यू डोंट नो, राइट. मान लो आप पॉप और पॉपुलर में डिफरेंस अंतर नहीं कर पा रहे. समथिंग पॉपुलर क्या होगा, वेरी पॉपुलर क्या होगा, बताओ आप, एग्जांपल बताओ. व्हाट इज पॉपुलर? पॉपुलर कल्चर मतलब जैसे अभी कल्चर है, जैसे कुछ बताओ. कोई भी चीज पॉपुलर क्या होगा ये बताओ ना. जस्ट टॉक अबाउट पॉपुलर, फॉरगेट अबाउट द पॉप. में जो ज्यादा ट्रेंड में हो. ट्रेंडी होता है मतलब कोई चीज बहुत ब्राइट शाइन कर रहा है, चमक रहा है. मैं पॉपुलर ही समझ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा पॉप क्या है. ठीक है, और बहुत ज्यादा ये हो रहा है. क्या अंडरस्टैंडिंग है सर की, लीव इट, आई डू नॉट गो टू डिस्कस. और आई एम श्योर आपके एग्जाम में नहीं आएगा आपको जो पॉप आर्ट पे ड्राइंग बनाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ. ठीक है, निफ्ट ने आज तक नहीं पूछा 20 साल से. ठीक, तो वो लीव इट, वो पार्ट अलग है. आपने जो करा, प्रैक्टिस किया, वेल गुड, आया तो बहुत बढ़िया बनाना. बट अभी उस पे बात आते हैं जो आ गया, पॉपुलर आर्ट आया, उसका मतलब पॉप है. क्वेश्चन क्या था मैं नहीं जानता हूं आंसर का, बेस्ड ऑन योर आई एम एक्सप्लेनिंग. तो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको मैं पढ़ूंगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की अलग होगी, क्योंकि वर्ड्स का कोई इमोशन नहीं होता है. आपने पढ़ा अपने हिसाब से, आप मुझे एक्सप्लेन करो. सर ने बताया उसको आप डोमेस्टिकेट कर रहे हो,
बट उन्होंने क्या बताया वो नहीं बता रहे हो, वो मुश्किल है बताना, वो मुझे समझना होगा फिर। तो अभी वहां पे नहीं जाते, अभी मैं ये समझता हूँ जो पॉपुलर आया, आपने नहीं समझा पॉपुलर में क्या करना, आपने कुछ बनाया। पॉपुलर में क्या होता है, ब्राइट होता है, साइन होगा, पॉपुलर इज समथिंग व्हिच इज राइजिंग, दैट मींस लॉट ऑफ ब्राइट कलर यू हैव टू डू इट। और आपको कलर ही बनाना था, कुछ और करना था, क्या करना था? सर उसमें ना वॉल वॉल के लिए, ड्राइंग रूम के लिए एक आर्ट वर्क बनाना था, उसमें पॉपुलर कल्चर दिखाना था एक अब अगर मुझे, हाँ समझ गया मैं, अब ड्राइंग रूम में अगर मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा भी, जो एलिमेंट्स क्या होगा, आप ना पॉप कल्चर का वैसे एलिमेंट्स होते हैं, फॉरगेट अबाउट द एलिमेंट, आप ऐसे हालत में एब्स्ट्रैक्ट ले लो, ठीक है? यस सर, जैसे पॉप आर्ट तो पता है क्या होता है, बट ना वो पॉपुलर कल्चर मुझे लगा ना कि कुछ ट्रेडिशनली कुछ बनाना है, तो आप सुन मुझे लोगे, आप मैं बताऊं आपको आपने क्या बनाया, अभी उससे कुछ नहीं होना है, मार्क मिल गया आपको, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तो कोई भी कर लेगा, छोटे बच्चे को पेंसिल दे दो हाथ में, वो भी एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बना के दे देगा आपको। यू ऑल नो अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, है ना? मैंने कहा आज मैं सिर्फ इजी बातों की बातें करूंगा, ऐसा काम जो कोई कर सकता हो, बट आपको लिखना होगा उसे, जो यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मूवमेंट कल्चर, ऐसे ही है। अब पॉपुलर आर्ट जो आपको पॉप बनाना था, सपोज एज पर द क्वेश्चन, उसमें भी अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट भी डाल दिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज यू आर, क्या मेंशन कर रहे हो आप, जो आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मूवमेंट या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट उससे इंस्पायर होके आप बना रहे हो, पॉपुलर आर्ट का कलर इंस्पिरेशन लिया है। पॉपुलर आर्ट को डिपिक्ट करना, आपको कोई भी चीज पॉपुलर होती है, ब्राइट कलर होता है, पॉप आर्ट में भी ब्राइट कलर होता है, लीव इट अबाउट दोज cartoon character or those bright lips and those things are which is quite famous art of the art, that particular art movement, उसको आप छोड़ दो। पॉप का मतलब ही वही होता है, आप देखो तो पॉप भी वही होता है। दिस इज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने प्रशंसा से क्वेश्चन पूछा था, मुझे इसलिए याद आ रहा है, which started in Britain, भूल गई वो, मुझे याद है, हाँ, when I was taking art history class. So the pop art started in around 1950. 1950 में ही स्टार्ट हुआ था, अर्ली 1950 स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। यूरोप के लोगों को लगता भी है वर्ल्ड का ऑब्वियसली द रिचेस्ट प्लेस, सो दे फील लाइक एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर, सो दैट्स a state, and the later 50 that's taken place in US. This is the story, right? So why this happened? Because after second world war, Europe, US, those are the leading country in the world, they had everything, wealth, ये वो, फिर उन्होंने जर्मनी, जापान, इन लोगों से भी उल्टा ये वसूला, बाकी जगह से तो लाया ही था, इंडिया से भी ले गए थे बहुत कुछ। तो ऑब्वियसली if there is a wealth, there is a some of the region of the happiness, so they started doing this. तो ये एक ऐसा आर्ट मूवमेंट था जिसमें कि बहुत ब्राइट कलर, कल्चर ऑफ those things, तो आप पॉप, जहां पॉप टाइप करोगे आपको दिख जाएगा, मोर और कार्टूनिस्टिक। तो पॉपुलर में भी वही होगा ना, समथिंग ब्राइट कम्स, क्योंकि वर्ड की मीनिंग चेंज नहीं होगी, भाव चेंज नहीं होगा, उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट जोड़ दिया या कोई एलिमेंट बना दिया, ट्रेडिशनल एलिमेंट ही आपने मान लो अंशिका बना दिया, सॉरी आई हैव स्टॉप यू, बट आई थिंक आपने ट्रेडिशनल बना दिया। तो आप क्या करो, आप उसको लिखो, तो मैं पॉपुलर, पॉप को लाओ ही मत, आर्ट क्या बोलो, पॉपुलर आर्ट मूवमेंट मुझे ये बनाना था, मैंने उसमें आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल मोटिव्स एंड पैटर्न यूजिंग द पॉपुलर कलर्स, ऐसे ये वो बनाना ठिकाना बन गया। आप क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं आप क्वेश्चन नहीं जान रहे हो, इन कंडीशन व्हेन यू डोंट नो द आंसर, तो आपने क्या किया, चेक करने वालों को भी डिलेमा में डाल दिया, जिस बच्चे ने गलत किया सही किया, वो सही समझेगा और अच्छा ही नंबर देगा अगर आपने बराबर बना के आए हो तो, समझ रहे हो? ऐसे कंडीशन में व्हेन द सिचुएशन कम्स, व्हेन यू आर नॉट एबल टू से यस और नो, तब हम क्या बोलते हैं, हम ओके वाला, मतलब आप ना बोल रहे हो, हाँ भी नहीं बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आपको पता नहीं, जैसे ऐसे करते हैं ना हम कई बार। अब ये जो गर्दन जो ऐसे और ऐसे वाला होता नहीं, अगर बीच में हो ना ऐसे ऐसे वाला, पता नहीं चलता बंदा हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। एक और चीज होती है ये बाय और बाय, ये भी समझ नहीं आता मुझे। हाँ जी रिम, कुछ बोल रहा आप? सर मम्मी पापा के बीच में किसको चूज करने का जब वो क्वेश्चन आता है तो हाँ, जैसे एक और है ना, हाई और बाय, अब ये हाई है या बाय दोनों टाइम में होता है। तो लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं और एग्जाम में भी आ सकते हैं, आई एग्री, आई हैव सेड दैट आई हैव आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा ही है। तो आपको लग रहा है आप गलत समझ रहे हो, तो वो एक क्वेश्चन को सबसे बाद में आराम से करो, एनर्जी लेवल भी बहुत सारा होगा, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स भी होंगी, और कुछ नहीं हुआ तो आप मुझे याद कर लेना, हाँ, आखिर गॉड काम आएंगे आप लोगों को।
And I'll make sure I'll solve all the doubt if such things are there. Yeah, Ansika, clear? समझ गए आप? हाँ यस सर. सर एक और डाउट था. बहुत डाउट बताओ. सर जैसे क्लास लेना है. मेरा सेशन हो गया 1 hour 30 minutes. नवीन सर सर क्लास लेना है. ओके. 2 मिनट. सर जैसे क्वेश्चन आता है ठीक ना, हम लोग जैसे क्वेश्चन समझते हैं एक्चुअली में वैसा होता नहीं है. जैसे बाद में पता चलता है अच्छा ये क्वेश्चन था. मतलब अगर ऐसा किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होता है. आपने जो समझा वही सही है, कुछ गलत नहीं होता है. जैसे टेस्ट पेपर में हुआ है सर कि अच्छा ऐसे भी हो सकता हुआ हो गया. एग्जाम में बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आप उसको कैसे लीड कर रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग. आप कैसे लीड करके समझा रहे हो वही सही होगा. अच्छा ठीक है, एकदम भूल जाओ उन चीजों को. क्या हो गया था वैसे बताओ, आप कहाँ आपको लगा गलत हो गया? जैसे कुछ क्वेश्चन आते थोड़े मतलब ट्विस्ट रहता है उसमें, तो लगता है कि अरे मतलब सिंगल हम जो सोच रहे हैं वही है क्वेश्चन ठीक है, बट लेकिन जब सर रिव्यू देते हैं बहुत सारा क्वेश्चन सब देखते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था, ये ज्यादा होता है टेस्ट में. देखिए उसका क्या मतलब है, जो आप नई चीजें सीख रहे हो इसका मतलब ये नहीं जो आपने जो किया वो गलत है. ये वाला माउस आ गया तो वाई वाला माउस गलत था, वो नहीं है, है ना. पहले आपने घर में देखा हो ट्रेडिशनली वाई लगा हुआ था. डिजाइन में समझने की बात है. व्हाट यू आर डूइंग इट दैट इज आल्सो राइट. कुछ तो नंबर आए थे ना आपको, 30 में से 10 आए ना. गलत बोल रहे हो खुद को, गलत नहीं होता है. और क्या करना है वो बताते हैं हम आपको, ठीक है, और बेटर कैसे करना है. अभी ऐसा भी माउस आ गया तो ऐसे फोल्ड हो जाता है ना. ये हो जाता है एडवांस वाला टेक्नोलॉजी वाला व्हाइट कलर का. तो आप गलत कुछ नहीं होता है, ऐसे गलत मत बना लो खुद को. आपने बहुत ही अच्छा करा है. यू ऑल आर इन अ बेटर सिचुएशन इन कंपेयर टू मेनी अदर्स. आप में से गलती से ऐसा होगा, अगर आपने एग्जाम में कोई ऐसी गलती कर दी, क्वेश्चन नहीं बनाया, कुछ और कर दिया, नहीं तो यू ऑल विल बी शॉर्ट लिस्टेड, दैट इज आई एम श्योर. और आज और कल हमने अगर कुछ और सेशन कर लिया, थोड़ी गुफ्तगू बातें कर ली, तो मैं श्योर हूं तो आप सबका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होगा. क्योंकि वो जो कंफ्यूजन है उसे ही खत्म करना है, राइट? Yes. हाँ, तो अब मैं आई गो बैक टू प्रशंसा. आई होप आई सी द हैप्पी फेस. Ansika is very happy now finally. जोर से बोल रही हूँ. यस सर. जोर से. यस. अब आपके सारे डाउट खत्म हो गए, आप खुश हो, वो अच्छी बात है. ये एनर्जी मेंटेन रखना. आई विल गो बैक टू प्रशंसा फॉर लास्ट 4 क्वेश्चंस. क्विकली आई नीड टू वाइंड अप दिस पार्ट. सो प्रशंसा, हमने 2 चीजें देख ली. कलर करते हुए आप स्टोरी बोर्डिंग या ग्राफिक्स आ गया, टी-शर्ट ग्राफिक्स या कोई मैसेज देने वाला, उसके लिए आप सोच सकते हो, वो बना सकते हो. आई विल नॉट डू मच चेंजेस. कलर आपको करना था और आप ये करो, बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू, जो आप उसके लिए बीच में आइडियाज लेके थोड़ा ड्रॉ करना, उसको अटेम्प्ट नहीं करना. कलर के बाद, क्योंकि कलर करके प्रैक्टिस हो गया, यू शुड मूव ऑन पोस्टर, क्योंकि वो भी कलर वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है. एंड आपका एक वार्म अप टाइप का कलर फिल करने का काम हो गया है. तो पोस्टर के लिए जो भी एलिमेंट्स आप यूज करने वाले हो, दैट एलिमेंट शुड बी देयर इन योर पेपर. जो आप बनाओगे एटलीस्ट आपने 10 बारी जो यूज किया होगा वही एलिमेंट बनाना है. अब मैं आपको ये बताऊंगा कैसे. मान लो आप कोई एक एलिमेंट बताओ, कोई चीज बताओ जो आपने 10 बारी ड्रॉ किया हो, और मैं उसको 10 टॉपिक से रिलेट करके बताऊंगा मिनिमम. फेयर इनफ? दोनों के लिए टास्क है. तो आप मुझे बताओ ऐसा क्या है जो आपने कम से कम 10 बारी बनाया हो. ह्यूमन फिगर. बहुत ही. चलो, आपने पोस्टर का एलिमेंट नहीं बताया, आपने मुझे ह्यूमन फिगर बताया. अब ह्यूमन फिगर में मेरे लिए ऑप्शन बहुत सारे हो गए. ह्यूमन फिगर में मैं एक और क्वेश्चन अब रेज करूंगा, बिकॉज़ आई एम लुकिंग फॉर मोर एलिमेंट बेस्ड. यू नो पोस्टर एलिमेंट बेस्ड होता है, स्टोरी बेस्ड नहीं होता है. बहुत सारी चीजें उसमें नहीं लानी है. ह्यूमन फिगर में कौन सा ऐसा चीज है जो आप बहुत अच्छा ड्रॉ करते हो? मतलब होता है ना, आईज, नोज, फेस, हैंड्स, पाम, कुछ भी, जो भी आपको लगता है, मे बी टमी. ऐसा कुछ है नहीं. मतलब कुछ भी होगा ना जो डिटेलिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. यू आर गुड इन दिस. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. इट्स नॉट फनी, लाइक यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज गुड. वी कैन. Should I change the element? नो, आप बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है. आप कोई पार्ट तो बताओ. आईज ही बोल दो. नहीं, आईज में बहुत अच्छा ड्रॉ करती हूँ, मतलब जो सही में अच्छा ड्रॉ करते हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट गोना हेल्प यू इन द एग्जाम. बट चलो, आई गिव यू ऑप्शन. अगर चेंज करना चेंज कर लो, नहीं तो इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं. इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल. दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग. Clothing. हां जी, क्लोथिंग. वो ठीक है. आप ह्यूमन फिगर में बताओ ना. व्हाट इज द प्रॉब्लम? कुछ पार्ट नहीं,
You asked like कौन से part में I'm good ना? अच्छा, तो आप बता रहे हो मुझे उनको ड्रेप करते कपड़ा, हाँ. आप उसमें अच्छे हो, नोज आईज फेस पे आप नहीं जाना चाहते हो, डिटेलिंग करना होगा। चलो, so I see, you know, it's something which is not at all related, लगता है ऐसे आ गया ड्रेप। अगर आप टी शर्ट बनाने में अच्छे हो तो टी शर्ट का ही लेआउट बना लो। चलो, ऐसे किया, टी शर्ट लेआउट बना दिया। मोस्ट ऑफ द सोशल मैसेज which we give or which we see as a youth, that's on टी शर्ट। आ गया मेरा टॉपिक, समझ रहे हो? अब उसके अंदर में जो एलिमेंट लूंगा मैं, वो भी ह्यूमन फिगर से ही होगा। आउट ऑफ द ह्यूमन फिगर आई विल नॉट गो, आई विल स्टिक विद द ह्यूमन फिगर बिकॉज़ आई नो ओनली ह्यूमन फिगर। मैंने अपने लाइफ में और कुछ नहीं बनाया है। आज भी आप लोग क्वेश्चन दो, अराउंड द ह्यूमन फिगर आई विल मेक एवरीथिंग, सब कुछ जो भी बनाना है, पोस्टर, लोगो, स्टाम्प, ब्रांडिंग, कुछ भी उसी में बना दूंगा मैं। प्रशंसा ने बताया जो शी इज गुड इन टी शर्ट, सो मैं लेआउट में टी शर्ट ले लूंगा, उसका नेक, हैंड्स में भी ऐसे ये बन गया, ओनली टी शर्ट्स, ह्यूमन को उससे निकाल दो। ग्राफिक्स क्या करना है, और मे बी यू कैन कीप आल्सो इफ यू वांट डमी। कभी कभी आपने अगर मेरा स्टोरी वगैरह, पर हम कौन से टॉपिक पे बना रहे हैं? हाँ, अब मैं हर एक, ये मेरा काम है, मैं सारे टॉपिक ले आऊंगा। कोई भी टॉपिक बताओ, आप बोलो, टॉपिक बोलो, यू गाइस कैन गिव मी द टॉपिक। पोस्टर, हाँ, पोस्टर का, स्टाम्प का, लोगो का टॉपिक, रैंडम, सबसे बुरा टॉपिक जो बनाने में प्रॉब्लम होता है। सर, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। हाँ जी, निशा, सुना नहीं मैंने। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स सर। स्पोर्ट्स सर, अवेयरनेस ऑन वोटिंग। अरे पहले क्लियर करने दो मुझे, कौन था ये? सर, स्पोर्ट्स। निशा सिंह। निशा सिंह, अच्छा, क्या बताया निशा ने? थोड़ा क्लियर करना। प्रशंसा, उनका आवाज थोड़ा लैग हो रहा है सर। मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंस बताना है। अच्छा, स्पोर्ट्स अवेयरनेस का बनाना है। हाँ, तो उसको स्पोर्ट्स अवेयरनेस बोलो ना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। नाउ आई गॉट इट निशा, सॉरी। सो शायद स्पोर्ट्स अवेयरनेस बनाना है आपको, है ना? तो आप बड़ा सिंपल सा काम करो, आप ना क्या करो, स्पोर्ट्स अवेयरनेस स्कूल कॉलेज में भी जरूरी है। तो जो पर्सन का आप टी शर्ट बना रहे हो ना, उस पे क्या करो, सामने में एक स्पोर्ट्स डे ऐसे करके लिख दो, स्पोर्ट्स डे, और नीचे स्पोर्ट्स सबका ग्राफिक्स बना दो टी शर्ट पे, हो गया स्पोर्ट्स डे। क्या करना है, टी शर्ट इज द बेस्ट वे यू ऑल वेयर इन स्कूल्स एंड कॉलेज, है ना, विजनरी। और आपको क्या करना, बोलोगे अच्छा आपने तो, अब यू वेंट बियॉन्ड द ह्यूमन फिगर, एलिमेंट्स कहा लिया आपने यहां से। तो एक और तरीका है, स्पोर्ट्स डे लिखो और अपने आईज में आप विजन दिखाओ, आईज को ड्रॉ करो, थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल, ड्रॉ द आईज, एंड उस आईज में दिखाओ तो यू नो दैट विजन इज देयर, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो उससे। समझ रहे हो ना आप? प्रशंसा आ रहा है ना? कॉन्सेप्चुअल हो गया ना? आई डोंट नो व्हाई। वेरी डीप। हाँ जी, वेरी डीप। डीप करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको जानना होता है। मेरे पास यही है, I mean, if you will follow the Hindu mythology, तो एक इंद्र भगवान होते हैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, ऐसे सीना फाड़ के अंदर में दिखा सकते हैं कुछ। हाँ, इंद्र भगवान के पास कहा जाता है जो हनुमान जी वाला, या इंद्र, हाँ वो भी कर सकते हैं। इंद्र भगवान के पास ना वो वज्र होता है, जो भी लड़ाई होती है उसमें वही वो निकालते हैं अपना, ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए मेरे पास क्या है, और एग्जाम में जस्ट वर्क अराउंड योर 2-3 स्टेप्स, डू नॉट गो बियॉन्ड, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग दिस। कोई दूसरा टॉपिक? ये तो स्पोर्ट्स डे का सॉल्यूशन हो गया, एक सिंपल सा भी हो गया जो आप और वोटिंग अवेयरनेस। हाँ जी, वोटिंग अवेयरनेस, वोटिंग अवेयरनेस। हाँ, तो अब आप बोलोगे वोटिंग अवेयरनेस के लिए मैं फिर से आईज वगैरह नहीं लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। आप क्या कर सकते हो, वोटिंग अवेयरनेस के लिए एक फिंगर ले सकते हो जो टी शर्ट के ऊपर में होगा यहाँ पे, और उसमें वोटिंग का मार्क लगा होगा। इतना सिंपल सा काम करूंगा, है ना? टी शर्ट ग्राफिक्स रेडी है। मेरा काम नहीं है। प्रशंसा ने कहा सी इज गुड इन टी शर्ट, सी सेड सी इज गुड इन ह्यूमन फिगर। तो ये वाला फिंगर जिसमें वो लगाते हैं, है ना, यही लगाते हैं ना, वो सब दिखाता है ना वोट के बाद, मैंने वोट दिया है, दैट इज योर राइट, वोट फॉर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यू नो, एंड ऐसे ये इंडिया का डेमोक्रेसी सबसे बड़ा, ऐसे बोलते हैं। आप लिख सकते हो कैप्शन, बराबर है, चलेगा, बाकी लोगों से अलग भी होगा। टी-शर्ट पर शर्ट का कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए कि इसमें क्यों बना रहे, कुछ टी शर्ट का कनेक्शन भी तो होना चाहिए। टी शर्ट का क्या कनेक्शन है? वेरी नाइस, यू नो, टी शर्ट इज द, whenever any brand anything, if you want to aware, you want to, टी शर्ट इसलिए नहीं मैंने लिया है, if you want to put the aware, टी शर्ट is the best way। टी शर्ट पे कितने कैप्शंस आते हैं, अच्छा, लेकिन से कि मैंने टी शर्ट के लिए प्रिंट बनाया है ऐसा?
हाँ, वो टी शर्ट ग्राफिक्स होगा। आप क्या कर रहे हो, पोस्टर का क्या काम है, लोगों को मैसेज देना, राइट? आपने क्या करा, टी शर्ट ही बना दिया। टी शर्ट इज समथिंग विच पीपल वेयर। जैसे कि आप देखोगे सेंटर पे ब्रांड जो है वो अपने टी शर्ट में, एयरटेल का टी शर्ट उसका लोगो पहन के लोग घूमते हैं, तो वो क्या होती है, उसके बारे में अवेयरनेस होती है। टी शर्ट पे आपने ग्लोबल वार्मिंग का अवेयरनेस पहन के आप घूम रहे हो एज ए यूथ, या पेड़ मत काटो उसका अवेयरनेस पहन के घूम रहे हो, तो आपका बेस एलिमेंट तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया प्रशंसा। सर बट पोस्टर तो पेपर वाला पोस्टर को ही पोस्टर बोलते हैं ना। हाँ, तो पेपर वाला पोस्टर नहीं होता, वो तो कॉन्सेप्ट है, उसको आप टी शर्ट पे बनाओगे तो और बेटर है ना। देन यू मे गेट, मैं जो ये लेआउट बता रहा था डिफरेंट बनाओ, टी शर्ट कैन बी वन ऑफ द लेआउट। इसमें भी टी शर्ट है, देखो इसके टी शर्ट पे भी आप ग्राफिक्स बना सकते हो। सो व्हेन यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट यू विल गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स। वो जो 15 से 30 की जर्नी है, 15 to 30 यू विल गेट थ्रू दिस। यही तो समझना है हमें, जो हमारे एग्जाम में there is nothing called wrong or right. You just need to stick with your idea. What is the idea of the postal? Social awareness. T-shirt is a very nice platform to aware the society, connect the youth. यही सब तो आपको लिखना है राइट अप में जो रिटेल स्पेस में होगा। So why you have chosen the T-shirt to make for a designing a poster? Why you have taken a T-shirt layout? जैसे आपने एजुकेशन के लिए देखा होगा, कई बच्चे बनाते हैं, दे मेक्स द लेआउट ऑफ दैट बुक ऐसे करके, नोटबुक का लाइंस वाले पेज, तुम उसमें कहा बोलते हैं आपने पेज पे क्यों बनाया अपना एजुकेशन। प्रशंसा ऐसा होता है, आपने भी कभी बनाया होगा, किसी का देखा होगा काम, उसके लिए बोलते हो इसने तो बुक बना दिया, पोस्टर काम बनाया। सर पर वो पेपर के अंदर बुक का प्रिंट बनाया ना। हाँ तो पेपर पे ही, आप पेपर पे ही दिखाओ ना। ये हाँ तो पहले मैंने ये समझा कि हम टी शर्ट के लिए प्रिंट बना रहे हैं। नहीं टी शर्ट ये पेपर है, इसके लिए। हाँ आई गॉट इट। चलो बढ़िया, यही करना है, टी शर्ट ही बनाना है, गलत नहीं समझना मेरे को। एक दिन एग्जाम से पहले अगर किसी ने गलत समझा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। प्लीज आस्क मी द क्वेश्चंस, बी इट यू आर ऑन YouTube and here in the class anywhere. I do not want later you should have a problem. My experiences should help you guys, it should not spoil you. ऐसे और कोई टॉपिक? I am still Sir, someone has asked the question on the chat. Child labor. चाइल्ड लेबर। चलो अब थोड़ा टी शर्ट से बाहर आते हैं, या टी शर्ट पे स्टिक रहे, बताओ, नहीं तो ये बोले अच्छा एक खोज लिया मैंने, टी शर्ट बोल दिया, अब बाहर जाओ ना। वही प्रशंसा ऑलवेज हैव सम क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोलेगी अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा सा खोल लिया टी शर्ट, अब इसी के आसपास बोलते रहेंगे, टी शर्ट पे ग्राफिक्स बना लो। सपोज यू हैव टू मेक द चाइल्ड लेबर, बट आई स्टिक विद द ह्यूमन फिगर, है ना, वही रहते, और आई नो ओनली हाउ टू ड्रॉ द ह्यूमन फिगर, ओके, नथिंग एल्स आई नो। सो चाइल्ड लेबर में किस किस तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप चाइल्ड लेबर को बना सकते हो। सपोज इफ यू आर शोइंग इट अ पर्सन who is, even though minus figure, you know, face is quite big ऐसे, and पूरा body, it is reality, is a hard reality. Many people in the world, they actually kill people to eat because they don't get food in their area. This is the harsh reality of the world. There are many countries, I will not name it right now, I do not want to even talk much about it right now आपके एग्जाम से पहले, but the sad reality is there. The city where you stay, Bangalore, Bombay, Delhi, we waste 40% average food every day. मतलब जो भी फूड होता है रेस्टोरेंट ये वो सब ऐड करके, you may not waste in a home, वहां पे लोग इतना खाना वेस्ट करते हैं, और कई जगह जहां लोगों को फूड नहीं मिलता है। इंडिया में भी because of the food and the proper diet, people are not even able to manage their body properly, minerals or vitamins they don't have enough, like you know what they should eat. और कई जगह UNICEF and all, they run such campaigning so that people should get the healthy and good diet. So I'll come back here. Child labor is one of the topic, very famous topic it is, which came in the exam many times, and I have a very deep relation also before the Nift as well, because I started participating in Children Right Congress since 2000. तब मैं बहुत छोटा था, and I represent India in national level also many times, and there are many conferences. So child labor is not only because of the one reason, there are many reasons about the child labor.
sometimes. So you need to know the reason, story behind of it first. So what all story is there behind the child labor? क्या क्या पता आप लोगों को? क्योंकि आप लोग क्या करते हो? You make somebody is wearing a very nice clothes, somebody wearing a dirty clothes, somebody having a food, somebody do not having a food. So please do not go on a Google ideas. The moment you will go on Google, you will get such ideas, which is no, this is neither nor making any sense. Know the hard reality of it. क्या पता आपको चाइल्ड लेबर के बारे में? किस कंडीशन में एक बच्चा काम करता है और किसी की मदद कर देता है? हेलो सर, जब उसको खाने का नहीं मिलता है या फूड का स्कार्सिटी होता है ऐसा कुछ, तब बाकी क्या रीजन हो सकता है? ये तो अभी जस्ट हमने बात करा, तो खाना नहीं होने फैमिली इतना अच्छी नहीं होती और फैमिली प्रेशर, child could be an orphan. Orphan kids, correct? For education, when you have to make money for the ill parents. Yes, true. What is? for education, Very rare cases, but there are. I know I teach and serve that such a school where a student comes in the evening, morning they work. You will not believe. You may not wake up for 5 a.m. class, but there are kids, though they go morning 5 a.m. they sell paper or they work somewhere 8 hours, and afternoon they go schools also. 8, 10, 9, or maybe the colleges, evening college or schools, so that they can continue their higher education. So that is also, there are some crowd. Anything else? तो कुछ बच्चों को जबरदस्ती ले जाते हैं पकड़ के और बोलते काम कर. Yes, child trafficking that comes. Yes sir. You have heard about this word is more familiar, women trafficking rather than child trafficking, and that's very sad. I was in 2-3 conference of trafficking also. Especially many of the places where natural climate comes, so many kids उस area को वो racket वाले लेके गायब हो जाते हैं. Their parents even don't know, they don't have records because they thought okay they lost their kids. So such kind of racket also very active during that time. So child trafficking is also very sad. That is one of the wings of the child labor only. I hope most of you are aware about child trafficking. Yeah, next. Anything else? हो गया? So there are a lot to discuss. I mean, what you guys know, that is also enough story. I will not go for. I will not start talking about all this because it's hardly matter how much I know and what is my information. I balance that things. I always try जो आपके काम का हो उतना ही discuss करें. आप जितना जानते हो, that is enough. Child labor कोई भी बच्चा अपने मन से नहीं करता. If you go and ask, बहुत कम बच्चों, कुछ बच्चे इसलिए करते हैं जो उनको अवेयरनेस नहीं होता एजुकेशन की, अभी तक उनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है, गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाई है, या सोशल अवेयरनेस हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं. दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी आल्सो, एट द सेम टाइम. सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज़ अगर सोसाइटी मेन स्ट्रीम में नहीं रहेगा तो आप अकेले डेवलप नहीं कर सकते. यू हैव टू वर्क अंडर दिस सोसाइटी ओनली. ओके, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. तो चाइल्ड लेबर के बाद से बाहर आके डायरेक्ट हम पोस्टर की बात पे आते हैं, है ना. 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो उस पार्ट पे हम आते हैं. सो सर. हाँ जी बोलिए. अंजलि को अपना पेपर दिखाना था. वो पेपर अब मैं नवीन सर की क्लास के बाद देखूंगा. एक जने का नहीं, सबका पेपर देखूंगा, जितने लोगों के पास पेपर होंगे लास्ट में. दैट विल बी लास्ट सेशन. So you guys have to wait now for Navin sir. Navin sir, I hope you are here around and you have already joined the session. So aptitude part is also important and last minute discussion. So I have some tips for aptitude that I'll discuss tomorrow. Sorry. So let's take it further. Sorry guys, you can stay back, and after aptitude is also the one part जिसके लिए आप बहुत परेशान हो. So let's have something about that also. Now moving forward to this particular part, child labor. The child labor is something. Riya is raising the hand. Riya, you want to say something? Or it's just by mistake? Yes, sir. Okay, please tell me. Sir, I am struggling for writing part. What time management? What time लग जाता है? What time लगता है? Time management मैं honestly कल discuss करूँगा.
क्योंकि आज हमने थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट का पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बट टुमारो इज द लास्ट सेशन जस्ट डे बिफोर द एग्जाम, सो हाउ टू इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट, इससे पहले भी हमने बात करा था few times. Yes sir. Yeah, so we'll discuss again, and personally आपको जानना है तो आप कल मॉर्निंग में after 10 और 11 कॉल कर लेना, 10 AM also कॉल कर लेना. Okay sir. At 8:30 I have a meeting, so I think that meeting get over by 10. So yeah, after 10 I'm okay with, तो आप 10 AM कॉल कर सकते हो. Between 10 and 11? हाँ जी. Between 10 and 11? हाँ, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि 7 I have to start, so I will reach there by 8:15. 8:30 से 10 जो है मेरा वो one-on-one meeting है. So morning time it's preferably 7 to 10 is not okay. तो आप 10 के बाद कर लेना. I will make sure मैं one-on-one आपको समझा दूँ. क्योंकि मुझे आपके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा. That goes to everyone. कोई भी कभी भी मैसेज कॉल आप लोग कर सकते हो. Yeah, and I suggest next 2 days please sleep on time, today and tomorrow. After 12 you try to sleep. Now quickly let's come back to the child labor. Why I asked your ideas? I said that you guys should know the basic reason. आप बहुत अच्छे से जानते हो. अब child labor, like suppose I do not know to draw all this, जो मैंने आपको concept बताया या आपने हमसे discuss किया, तो यही reason से child labor होता है. I know only human figure how to draw. So I said one way is you are showing that society makes people to work, correct? बच्चों को कौन काम करने के लिए मजबूर करता है? ये सोसाइटी, बिकॉज इट्स वेरी अनबैलेंस्ड. रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम मोर पुअर. अभी लॉकडाउन में भी वही हुआ. आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसे लोग, उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, उनके पास और इन्वेस्टमेंट आ गया, और गरीब लोगों के पास और पैसा कम हो गया. सो दैट इज व्हाट एवरी ईयर देयर इज ए फाइट. तो कैसे चीजें इंप्रूव होगी, कैसे चीजें बेटर होंगी. 1 सेकेंड. So quickly in 2 minutes I will close this explanation. Navin sir is already here in the session, so we will start explaining you aptitude session, and the later part I'll explain you. We'll come back with some of the inputs from my side for aptitude, and after that for some of the paper which you have solved discussion. क्योंकि आज के सेशन में जो हमने अभी जितना डिस्कस किया है, that will help us to understand there. So stay here in the session. और if you will miss here in the class, YouTube से same video is live, तो आप वहां जाके देख सकते हो, समझ सकते हो. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एप्टीट्यूड एंड अगला 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. अभी हम ये चाइल्ड लेबर पार्ट को खत्म करते हैं. सो व्हाट आई विल मेक इट, आई विल मेक अ चाइल्ड फेस. यू नो चाइल्ड फेस, हाउ टू ड्रॉ. सो ऑल द लिप्स एंड डिटेल विल कम इन अ बॉटम पार्ट. इट इज नॉट मैचुरेटेड फेस लाइक आई एम नॉट सिटिंग इन अ बोर्ड साइड यू, बट यू गाइस नो ओके यार कैसे ड्रॉ होता है. कल मैं दैट्स माय प्रॉमिस, आई विल शो यू द फेसेस आल्सो हाउ टू ड्रॉ. चाइल्ड वाला लेबर का फेस कैसे होगा, बच्चे का. So small kid's face, that's a placement of the lip, nose and all, accordingly you have to do it. And you will see that those burden of the society, corruption ka burden, unbalance of the society and rest of the things is actually impacting a child, indirectly forcing a child to work. Child labor सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि उसके घर में लोग बीमार हैं, उसके घर के लोग अर्न नहीं कर सकते. It is a social and society's responsibility to make sure, जैसे आपके पार्लियामेंट में हर एक जगह वॉइस रेज होता है किसी चीज के लिए, ये इशू है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए. So this is the society responsibility. In my words, I do not believe it's just a government responsibility. We all are responsible for this. Okay, so that is how you can create. Another way I said that a child labor should look like a child labor. So you will make a big face and body को कार्टूनिस्टिक बना दो, एकदम बोन्स जैसा दिखता हुआ, पतला सा. और ऐसे लोग सही में एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में. Very unfortunate it is, but a person who is do not have a proper growth, उनको ऐसे ही दिखते हैं और ऐसा ही होता है. Yeah. Third part of it, you can make a hands, एक छोटा सा palm वगैरह, because I stick with my initial idea. Prashansa has given me, I know how only to draw human figures, और around that मैं बात कर रहा हूँ. तो एक आपने palm बना दिया ऐसे करके, उसमें एक छोटे से बच्चे को ऐसे बैठा दिया, और ऐसे बहुत छोटा सा टाइनी सा. कई बार सीरियल्स में होता है ना, सो हैंड इज वेरी बिग, मतलब कोई चीजें बहुत बड़ी होती है, कोई बड़ा सा ऐसे इंसान होता है, उसके सामने एक छोटा सा इंसान होता है. सो दिस पाम इज बिकम क्वाइट बिग. ये वाला पार्ट बहुत बड़ा और वो बच्चा बहुत छोटा है, और वो सोसाइटी नॉर्म में फंसा हुआ है, कहां जाए, क्या करे, कैसे होगा, ही इज लॉस्ट. सो ही इज इन दैट ट्रैप.
You can give a very strong caption. बहुत सिंपल सा हैंड बनाओ, बहुत ही नन्हा सा ऐसे बच्चा को बता दो, और आपको अगर डालना है तो उसके अराउंड आप चीजें दिखा दो, क्या चीजें हो रही है, हाउ एयर में, मतलब आप क्या करो, ऐसे ब्लैंक एरिया एयर का बनाओ और उसमें वर्ड्स लिख दो, क्या क्या चीजें, वर्ड्स में, बेटर फॉन्ट में, तो सोसाइटी की क्या क्या चीजें उसे इंपैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है काम करने के लिए, फैमिली, पॉपुलेशन, कंट्री पॉपुलेशन है ना, people are not, that is also, so anything is a curse or boon. Population is boon also because we are the youth nation, the highest number of the youth in India we have, that is the human resource, a biggest energy. At the same time जब वो राइट डायरेक्शन में नहीं काम करते हैं, टिकटॉक वीडियो बना के सुसाइड करने लगते हैं, that is the wrong part of it, you know. So everyone, either an individual or as a society also, there is an impact of every small things. और क्या मैं सोच सकता हूँ, आई एम अ चाइल्ड, थोड़ा ड्रामेटिक मैं आप सोचता हूँ, एक बच्चे का फेस लो, आप उसको एक मास्क की तरह बना दो और उस मास्क में मैसेज डालो आप, मास्क समझते हो ना, ऐसे थोड़ा बाल वगैरह ड्रामेटिक, लाइक सपोज मैं अपने बाल में करके दिखाता हूँ, ऐसे खड़े हो गए मेरे बाल बड़े अजीब जैसे, ऐसे खड़े हुए काफी टेंशन में, और फेस जो है वो पूरा ड्रामा वाला हो गया, बच्चा है बट आईज थोड़ा उठा हुआ, फेस अजीब सा, ये मतलब वो बच्चा बहुत ही निहायती रूप से परेशान है सोसाइटी नॉर्म से, इस प्रेशर से, 14 घंटे काम करके, अ प्लेस लाइक ग्लास फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री। मैं इतना एग्जांपल इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मैंने लाइव देखा है। If you will just imagine, you will start crying. I do not want to go for all this, and I do not want to make it here, but that is a real fact, harsh fact. The trafficking situation in India and across the world is 10 साल की लड़कियां 18 ईयर की दिखती है because of the hormone injections. That's sad it is. So we may discuss later some other day. Today I will hand over to sir right now. मगर आपको एक चीज का आइडिया रखना है, आप जो ड्रॉ कर सकते हो वही ड्रॉ करोगे। मैं एग्जांपल ऐसा इसलिए दे रहा था, जो you guys have given me a situation, I know only to draw human figure, but I am not doing it complete human. Please avoid. As per the topic you are supposed to draw. Clear? That's what my message is during entire day session right now. This particular part of the session, entire session, you know what all things we have done it. If you haven't watched and you haven't done earlier, please go back and check the previous video ka initial part of it. And now I am moving forward, and this session I think Navin sir is here. Navin sir, are you here right now? Yes. Hey, thank you. Navin sir is waiting from since long. I am supposed to complete this session in 1.5 hours, so now it's 2 hours almost. Yeah, over to you, Navin sir. We can continue the aptitude session discussion. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Hello everyone, how are you? Hello, sir. Is my screen visible on YouTube? Yes, sir. That's more important. Yes, sir. But I got comment in last video that the screen was not visible completely. I mean, that font size was very small, so that should not be the problem now. Let me check first, then we'll continue. Better now? Yes, sir. Okay, I cannot make better than this. See, in this session, our main agenda is not to solve question, but to learn the concept. Actually, revise the concept. We already have learned all the concepts. Right now, we are going to revise everything. Okay? One class, and we are going to revise everything. Maths, reasoning, complete revision. Okay? We'll start with simple question of number system. Question is, how many numbers up to 800 are divisible by 24? And now I have to solve this question in 30 seconds. I don't have more than 30 seconds. What should be the approach? That is the main point. Anyone? I know you So know 240 into 3 करके मतलब 800 तक कितना आ रहा है we can. See, simple thing, I'll tell you. It will not take even 30 seconds, less than that actually. So what we need to do is,
Simple thing, 800 is there, divide it by 24. Okay, if you divide 800 by 24, what will be the question? That is your answer. That is your answer. Don't do anything. So 24 into 3 times will be 72. Again you have 80, again 3. So answer is 33. So it will not take even 30 seconds. We should know. So there are just 33 numbers up to 800 which are divisible by 24. But there can be question like, how many 3-digit numbers up to 700 are divisible by 24? Then what will you do? How many 3-digit numbers up to 800 are divisible by 24? Divide by 999. See, our answer will be 33 minus, there are 4 numbers which are divisible by 24, but those numbers are not 3-digit numbers. Those numbers are 24, 48, 72 and 96. These numbers are also divisible by 24, but they are not 3-digit numbers, so answer will be 29. Did you understand? Yes, sir. Yeah. This is the concept. Important. Now, this is simple question. We will use simple basic equation. If 2 by 7 of a number increased by 25, so we'll assume that the number is x. So number will become 2x by 7. If 2 by 7 of a number and number is x, so number will become 2x by 7 is increased by 25. If this number is increased by 25, this becomes 45. Find the value of x. Simple. Yeah. You know that this total 70. Yeah. So number is 70. Because this total, I know that this total should be 20. 20 plus 20 is 45. So answer in this case, x will be 70. 2 by 7 of 70 is 20 and 20 plus 25 is 45. Simple. Okay. They can ask you to simplify a fraction is given, you need to simplify this fraction. So normally what will people do? They will take this. This is the correct answer, but this is wrong. This is not the simplest form, remember. सर नहीं सर सर ये मॉक टेस्ट में पेपर था ना? फर्स्ट मॉक टेस्ट यार बट ना इसका आंसर मैंने 1 किया था, ये इसमें 1 नहीं किया था, मैंने इसको सॉल्व किया था, तो जो सॉल्व करने पे आंसर आया था वो सही नहीं था, ये सही था। हाँ सर फर्स्ट ही सही Yes, था। sir, it happened. ठीक है हाँ सर, इसने wrong दिया था। I got to know. So normally people will do this, which is wrong. Okay. After decimal 4 zeros are there, so put 4 zeros. Okay, but this is wrong. This is not the simplest form. Simplest form will be, I think, this Option 2. Yes. Yeah, because you can divide both the numbers by 25. So 25 into 2 times 50, 10, 25 into 4 times, and so this is the answer. So option 2 is the correct answer. Take care of this. This is the correct answer. Okay. Now third question, we'll use exponents and powers. Exponents we have learned. First, this number you need to convert into fraction or some number. So if I convert this into fraction, I'll write 1 by 1000 and to the power 1 by 3. Yes, sir. 1 by 1000, can I write 1 by 10 to the power 3? To the power 1 by 3. And we can write 1 by 10 to the power 3 as 10 to the power minus 3. To the power 1 by 3, so multiply this 1 by 3. Final answer will be 10 to the power minus 1. And 10 to the power minus 1, again we can write 1 by 10 to the power 1. 1 by 10 to the power 1 is 0.1. Yes? Yes, sir. Just remember, we are focusing on the concept. That is more important than solving the question. If you know the concept, you are going to score good marks. Okay? Now, the concept of LCM in case of fraction says, if you have to find the LCM of any fraction, you will find the LCM of numerator. एक बार ऊपर वाला दिखाना ना.
Okay. So concept says find the LCM of numerator, and then we find the HCF of denominator. Okay. LCM of numerators are 4, 8 and 3. So their LCM will be 24. Yes? Yes. And we need to find HCF of 3, 9 and 5, which is 1. So answer is 24 by 1, 24. If they ask find the HCF of the same number, what will be the answer in that case? 1 by 1 by 24. 24. 1 by not 24, not 24. 45? 45. 45. 45. Yes. 45. Yes. We have learned division, all the questions related to division. So what must be added? So simply Yes, we'll sir. divide. Simply we'll divide. Okay, and divide. 5 times 55. 31, 2 times 22. 9 1 91. 8 times 88. 3 37. 3 times 33. 4 3 43. Now 43 is there. What should be added to 43 so that it is completely divisible by 11? 1. 1, so 1 is the answer. Or there is another method also. Rule of divisibility said sum of alternate numbers. Sum of numbers at एक odd बार position and सर sum एक of बार और numbers बता at. दीजिए. We'll do another thing. Sum of numbers at alternate position. So what is the sum of numbers at alternate position in this case? If we find the sum of alternate numbers, it will be 3 plus 1, 4, 4 plus 8, 12. Another sum, 7 plus 1, 8 plus 5, 13. One number is 13, another number is 12. It means one must be added so that their difference will be 0. So 1 is the answer. This is what we have learned in rule of divisibility of 11, right? Yes, sir. Or simply you divide this number. Later on you will get some remainder. So in this case, if we divide, don't consider anything, remainder will be 10. Okay, if you divide this number by 11, remainder will be 10. So your answer will be 11 minus 10, 1. There are so many methods. Okay, unity method, I'm not going to solve this. Cost and price, whenever there is direct relation. Okay, cost of 24 pence is 96. It means cost of 1 pen will be just 4 rupees and cost of 16 pence will be 64 rupees. Cost and price direct relation. This is what we have studied in chain rule. Next question, if you see, again it's related to chain rule. Can you see? A painter can paint a window, one window every 3 by 4 hours. So I'll write in 3 by 4 hours, painter is able to paint one window. So in 1 hour, obviously he will be able to paint more than one. So that will become 4 by 3. In 1 hour, a painter is able to paint 4 by 3. So in 21 by 4 hours, it will be 4 by 3 into 21 by 4. 4 cancel out, 3 into 7, so answer will be 7. Okay, all clear? Any doubt? So in the chain rule above, there was opposite relation, no? Like No, direct relation. Why will it be opposite relation? okay, right? Yes. It's number. A painter can paint a window. So number of window and time. It's not speed and time. Yeah. Sorry. Okay, next question is related to average chapter. Try. I'll give you 30 seconds, not more than that. "30 seconds more than enough."
Someone told me that we cannot use micron pen. That's why I asked that, and I was just trying. Okay, we'll continue where we left. The average age of 7 members of Mahesh's family is 25 years. Okay. Right now it's 25 years. There are 7 members in the family and average is 25 years. Let's say in 2021. This is the current year. What is the question? Question is the average age of the same family 3 years ago. Average age of 7 family members in 2018. So answer will be 22 years. In 3 years back, if you go, average will decrease by 3 years. If they are asked what will be the average after 3 years, average of 7 family members in 2024 will be 28 years. Yes, this is what we have learned. If number of family members not changing, average will change based on time. 1 year में 1 year increase हो जाएगा total. Okay, next. The average of two numbers is 14.5. We will solve this question using options. The average of two numbers is 14.5 and the square root of their product is 10. Square root of their product is 10. Can we say that product of those numbers will be 100? More than 16? Yes, sir. What are the numbers? Take two numbers and their product is 100. 16 and 9, no. This is correct answer. And this is the only option where average is 14.5. So we didn't do anything. Yes, sir. हमने क्या किया? We identified two numbers. Their product should be 100 because their square root. If square root is 10, their product will be 100. If square root of this is 10, it means obviously the number is 100. Sir, there was a question Yes. like this, but they were not given options where both of them were given. So because here two of them are given, we can know which number it was. But when it's only one number given, that time it was very confusing. And it was given as a square root of the. There is average, there must be more than one number. Yes, sir, I agree. Sir, it was given that the square root of the product is given and x square plus y square was given. Then also we can solve. You want to say x square plus y square is something and x into y is something. What do you need to find? No, the square root of the product. This much. The question is, what do you need to find? We need to find one of the difference. What is between the difference x and y. number? Are those numbers 8 and 9? Sir, I'm not sure because I'm trying to find the question right now. Sir, 80 by शायद 36 था. ये x square plus y square. That question is different. I remember that question. Okay. The question she is talking out, answer will be 8 and 9, I think. Sir, but वो आया कैसे वो मेरे को समझ में नहीं आया. But आपको full question बताना पड़ेगा ना. Only then I will be able to tell. Yes, sir. I'm trying to find. Give me a second, please. Sir, answer उसका 16 and 4 था पर. जो भी हो. Sir. Yeah. No, sir. Just give me a minute. I'm trying to find it. A school bus. This question is related to percentage chapter. A school bus reduces its speed from 60 meter. It should be 60 kilometer. Or leave it. 60 meter per hour to 40 meter per hour. What did we learn? Percentage increase, percentage decrease, percentage error. Formula is difference
divided by old value. This is what Old we have value. learned, right? What is their difference? 20. 20. What was old value? 60 into 100. That is your answer. Yeah. We will try to solve 33.3. each and every question within 30 seconds. 33.3%. Remember this. 30 seconds में हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. There will be very less question related to maybe profit and loss or simple interest in compound interest that can take more than 30 seconds. Again, this question is related to percentage and we will use unitary method to solve this question. A fruit seller had some apples. He sells 35% apples. He sells 35% and still has 390 apples with him. He sells 35. Can we say that 65% apple left? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And 65% left means 390 left. It's given. Yeah. What does 100% mean? That is your answer. Unitary method. If 65% means 390, what does 100% mean? That is your answer. So we can also do by doing 65% x is equal to 390 and then just find it, right? Quickly. Yeah, same thing, same thing. So answer will be 600. Now this question is related to profit and loss. Shopkeeper, we have studied this. A shopkeeper uses a weight of 960 gram instead of 1000. 1000 is considered as true weight, right? He is using 960 gram. What is his gain percentage? So formula of gain percentage, we have learned this. Gain percentage is equal to, there is error of 40 gram divided by true weight minus this false weight. Sorry, 100 minus error, that is 960 and into 100. If you solve this, you will get the answer. This is the formula. Error divided by true weight minus error. True weight minus error is false weight. Into 100 is your answer. Yes? Yes, sir. 25 by Sir, 25 by 6. Yes. हाँ जी बताइए. So I could not find the question that I was asking because I really can't find it. But there's another question that I'm very like I didn't get the answer to on how to solve it. It's find the number in the unit place in. So can I tell this to you? Yeah. Find the number in the unit place in 1532 raised to 162 into 3454 raised to 161. Why are you asking? This is not. It won't come. Syllabus. I told the same thing. I told you same thing, right? Do you remember? You asked me on Instagram. This question is related to cyclicity. Yes, sir. Oh, Yes, I didn't know it's related to cyclicity. I really didn't. If someone is asking find the unit digit, that is cycle. There are some things you can keep in mind. Any number ending with A1, if you put any power, unit digit will always be 1. Same goes with 5 and 6. 5 to the power 3 is 5, large digit. 6 to the power 189 is 6, large digit. Any number ending with 1, 5 and 6, put any power, large digit will be same number. Okay, yes? sir. Keep this in mind. Excuse me, I think I found the question that you were talking about, and I also faced confusion in this. The question is, the sum of squares of two numbers is 80 and the square of the difference is 36. The product of the two number is, and the correct 22. option was 22. Yeah. Yes, that's the one. Thank you for finding it. Can you repeat the question? No problem at all. The sum of squares of two numbers is 80 and the square of the difference is 36. The product of the two numbers is? Okay.
if you simplify this, can you write this as x square plus y square minus 2x equals 36? Yes or no? Can't we do the square root? Squaring क्यों करना है? If Square you root simplify x x minus y minus y equals to whole 6. square, can you write this much? Yes. X minus y whole square, x square plus y square minus 2xy. Now value of x square plus y So square is once again, 8. don't they mean x square minus y square? Or No, it's x. Read the line of that question. Square of their difference. okay. Square of their difference means first find the difference and then do the square. This is called square of their difference. Difference ka square, right? So if you solve this, put here 80. So 80 minus 2xy equals 36. Remember, you have to find product. So you have to find x into y. Kitna hoga? Answer will be 22. 22. Yeah. Okay. Now we'll do. In profit and loss chapter, we learned a concept which says if two items, articles are sold at equal rate, equal price. If there are two articles, suppose so selling price of one article is 50 rupees, selling price of another article is again 50 rupees. One is sold at X% profit, another is sold at X% loss. Remember, X is X square by in this 100. question X is 50. In that case, there will always be loss, and that loss will be equal to X square by 100. This is what we have learned in profit and loss. So in this question, x is 20, so it will be 20 square by 100, which is 4% loss. Yes or no? 4% loss in this question. Now total CP, total SP. Total SP is 48 rupees. There is a loss of 4%. Remember, 4% means 96. So you can find CP. CP will be greater than SP because there is loss. So if you solve this, CP will come 50 rupees, SP is 48 rupees. It means there is loss of 2 rupees. 2%. Yes. Yes. Again, I'm saying what is important? Important is to understand the concept. Okay. This question. In ratio and proportion, there are two terms. In ratio, there are two terms, x and y. This is called antecedent, and that denominator is called consequent. So in a ratio which is equal to 3/7, antecedent is 33. What will be consequent? You can know. 27. Yeah. Okay, now this question is related to mixture and alligation. So my plan is to cover all the chapters. In what proportion must water be mixed with spirit? So what did I tell you? That normally all the time we take CP of water as 0. So in this question also CP of water will be 0. 0 rupees price. Okay. CP of spirit will take 1 rupee. Okay, and we'll mix water and spirit, so we will have SP of mixture, and that is 1 rupee. 0 rupee and 1 rupee दोनों को mix करेंगे तो 1 rupee. Now in mixture and alligation we deal with only CP. Now CP of water we know, CP of spirit we know, but we don't know what is CP of mixture, because in this water is also there. There is not 100% spirit. So obviously CP of mixture will be less than 1 rupee. CP of mixture you have to find. So you know selling price is 1 rupee and there is profit of 12.5%. So SP of the mixture, sorry, CP of the mixture will be how much? 8/9. You will Yes, do sir. 1 into 100 by 100, 12.5 you will do.
If you solve this, finally you will get 8 by 9 rupees, which is less than 1 rupee. And we all know that in mixture and alligation, cheaper price, expensive one, and this mean price will be between these two values. Now, if you find the difference, it will be 1 by 9 to the ratio 8 by 9. 9 and 9 cancel out. Final will be 1 portion of water and 8 portion of this spirit. So answer will be 1 by 8. Sir, can you explain it again? So normally we take CP, cost price of water, in this chapter mixture and alligation takes 0 rupees. CP of water is 0, and we have assumed that CP of spirit is 1 rupee. If we mix these two, price will be 1, that is selling price of mixture 1 rupee. Selling price is 1 rupee, obviously CP will be less than 1 because there is profit on selling, 12.5% profit. So CP of mixture from profit and loss concept we found out that is 8 by 9. Now apply the rule of alligation, you will get the answer. This is rule of alligation. Work and time. A can do a piece of work in 15 days. So I'll write here A and then I'll write B. A is doing some work in 15 days and B is doing the same work in 10 days. Their LCM is total work. Now this 30 is total work. It means A is doing 2 work per day and B is doing 3 work per day. B is more efficient because B is taking less time. Now question is, B works at it for 5 days and then leaves. Only B is working for first 5 days. It means B is doing 3 work per day and he has worked for 5 days. He is completing 15 works. 15 work. Yes or no? Yes, sir. It means 15 work is left. Total work is 30. 15 is 30. done. Now this 15 will be completed by A. So answer is 15 by 2. Yes? 7.5. 7.5. This is unitary method. Question related to race. Less probability to come this question. नहीं पूछेंगे normally. There are 3 persons in a race, A, B, and C. Why did I write A here, B here, and C here? Because it's given in the question. A can give B a 40-meter start. So if in a race A is running 1000 meter, B is getting chance to run 40 meter less. So it means B is running just 960 meter. And C is getting 70 meter start, means C is running just 930 meter. Okay. How many meters start can B give C? Start is given by B. C. B is not running 1 kilometer. So if we compare with B and C, C is getting 30 meter start. So in 960 meter of race, C is getting 30 meter start. Can we say this? Little difficult to understand if you are joining for the first time. 960 meter, in 960 meter race, C is getting 30 meter start. So in 1 meter race, C will get 30 by 960 meter of start. So what will be the start in 1 kilometer race? That is 1000 meter race. So answer will be 30 by 960 into 1000. Solve this, you will get the answer. This is the question. You can read it again. Take time, try to understand. Less likely to be asked, but anything is possible. Okay, now this question is related to simple interest. Okay, a sum becomes 10 by 9 times. Remember, whenever you see this sentence, a sum becomes, it means whatever it is becoming, that is amount. That is amount. So if sum is just 1 rupee, a sum become, and that sum is principal. So amount is 10 by 9 rupee, and I have assumed that principal was just 1 rupee.
I can do this. You can take any amount. So principal was 1 rupee. Amount is 10 by 9. What will be simple interest? Difference of these two, quickly find. Difference of amount and principal is 1 by simple 9. interest. So 10 by 1 by 9 9. minus 1, that is 1 by 9. 1 by 9. Now you need to find the rate of simple interest. What is the formula of rate? Rate is equal to simple SI interest into into 100 divided by principal into into time. time. Yeah, so answer will be 100 by 9%. 100 by 9% means option 2. Option 2. Yeah. So whenever you see question like this, sentence of this question, a sum becomes this. So whatever it is becoming, that is amount. Remember this. And that sum is principal. You can assume anything. You can assume that principal is 10 rupees or principal is X or 100, anything. I have taken 1 because 1 is a smaller number, so there will be less calculation. Now this question is related to compound interest. Find the compound interest on 20,000 rupees at 12% per annum for 6 months. Now this line is important. Compounded quarterly. So whenever you see compounded quarterly, it means time is 6 months. But in 6 months, we have 2 quarters, right? Yes. In 6 months, we have Yes, sir. 2 quarters. 2 quarters. Rate is 12% per annum. So rate, what will be a rate quarterly? Will it be 3% per quarter? Can I say this? Can I say that rate will be 3% per quarter? Yes, sir. Now you Yes, can sir. apply. Now quickly find SR, successive rate. 3% ka successive rate. You need to find compound interest. Find successive rate. It will be 3 plus 3 plus 0.9. 6.0. How much? 6.09. 6.09. Yes. Now you need to find compound interest. So compound interest will be 20,000 into 6.09 by 100, and that is your answer. So your answer will be 20,000 into 6.09 divided by 100. 20 cancel out, now multiply. If you remove Sir, this decimal, this will become 2, so answer will be 1218. sir, Yes. ये सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला तो हम तब पुट करते हैं जब टाइम 2 रहता है, अभी तो 6 है. हाँ, तो टाइम 2 है ना, टाइम इज 2 क्वार्टर. ओ आपने t is equal to 6 लिखा, so I got confused. T is 6 months. T is 6 Yes, months. yes. In Okay, 6 months we have 2 quarters. Yes, So sir. answer is 1218. Yeah, this is easier method. If you are going, first thing, it's difficult to remember the formula all the time. That's why this is better method. And Sir, when time is in fraction, it's more difficult. Yeah. I just want to confirm once. You told me that अगर 3 साल का आएगा, then you do 2 साल का this SR, and then you do 1 Yes. year of simple interest with principal interest, as the yes. new one, right? Yes. And then you find what do you call amount. Compound interest. If you add total compound interest of these 2 years, and then third year. Yeah. Third simple interest of third year, no? Yeah, simple interest of third year. That will be your total compound interest for 3 time period. Okay, I just wanted to confirm, sir. Thank you. Yeah. Remember, if it is compounded quarterly for third time period, you will find simple interest for 3 months only. Don't find simple interest for 1 complete year. Your rate is going to be 12%, not 3%. In simple interest, what is the trick? In simple interest, rate is always yearly.
and this time is always, rate is per annum and time is 1 year, always yearly. Rate is yearly, percentage yearly, and time is also yearly. Okay, so if it is compounded quarterly, time will become 3 by 12 year, right? सर और टाइम Yeah. 3 ईयर से ज्यादा दिया है तो फिर हम ऐसे नहीं फॉर्मूले से रहेगा, कैसे कर डोंट सकते वरी, हैं? नहीं ऐसे देगा। ऐसे नहीं करेंगे तब नहीं, टाइम से 3 से ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके। और 3 से ज़्यादा इन केस अगर आ गया तो फिर 2 बार सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके सर। या इजी क्वेश्चन, number system. Again, you divide for what least number must be added to this so that it is completely divisible by 40. If we check option, we don't need to solve. Do you know that this is 40? It means any number ending with 0, this can divide only those numbers which number is ending with 0. Yes? Yes. Yes, sir. Yes sir। 40 can divide only those numbers which numbers are ending with 0. For example, 40, 80, 120, 200. Can you see all the numbers are ending with 0? Same thing can be applied in this question. Out of the 4 options given, which option if you add in this, it last digit will be 0? 2। So this is your answer. 2. You don't need to solve. This is your answer. Yeah? So make the best use of options given in the question. Now next question, which of the following cannot be a digit in the units place of a perfect square? Perfect square of 1 is 1, perfect square of 2, 4, 3 is 9, 4 is 16, 5 is 25, 6 is 36 again, 8 is 64, 9 is 81 and 10 is 100. Which all numbers are left? 2, 7. 3, 7 and 8 also. 2, 3, 7, 8 cannot be the last digit or units digit of any perfect square, which is given in the option 7. So 7 is the answer. 7 cannot be the unit digit of any perfect square. If they ask you for cube, you can similarly do for cube also. Cube of 1 will be 1, cube So of 2 can you will be... repeat? Sorry? Sir, ये 7. Yes. 7 cannot be the unit digit of any perfect square. Yes, sir. Yeah. So do you have any doubt in this? No, sir. I was saying similarly you can do for cube also, perfect cube also. Perfect cube of 1 will be 1, perfect cube of 2 will be 8, perfect cube of 3 will be 27. The sum of actually all the numbers are there in the perfect cube. If you see 1 is there, 0 is also there, is 2 there, 2, 512, 2 is also there, 3 is there, 343, yes, 4 is there, 64, 5 is always there, 6 is there, 216, 7, 3. So all the numbers are there in perfect cube. So they can ask you this question related to perfect square only. This question you are talking about? Yes, sir. Yeah. This question simply convert the fraction into decimal. We have learned how to convert any fraction into decimal and that will give you the answer. If you convert this, this is 0.6 and convert up to 2 places. Convert this. 9 into 7 times 63 again. Convert this now. 110. 15 into 7 times 50. Now last one. 19 into 8 times how much?
152? Now what do we need to find? Which of the following is the greatest number? Obviously, this is the greatest number. 0.4. Easy one. So how will you start? You will start from question from the right side. What is the rightmost number? 289, and that is under root. So if you come out of root, it will be 17. Now this 17 will be added to 152. 152 plus 17, and that is under root. Final answer, if you see, it will be 13. Yes, Yeah, sir. 13. This 13 will be added to 51 and it will become 64, and that is under root. 64 under root is 8. 8 will be added to 17 and 25. that will be 17 plus 8 under root. So final answer will be 5. 5. Do I need to solve this question? This is simplest one. Find the LCM. Find the least number means find the LCM. So remember this thing also, which is exactly divisible by. Whenever you see any question in which lines can be like this, exactly divisible by, and then there are some numbers, all the time find LCM. Find the least number which is exactly divisible by 12, 15, 20, 27, find the LCM. Least number and this sentence means find LCM. Find the LCM. What is the answer? 540. 540. Find the least perfect square number which is exactly divisible by 3, 4, 5, 6 and 8. First 36 we will find out which is the least perfect square. Which is perfect square? I think this is the only perfect square number. These are not perfect. So this is the answer. You don't need to find anything. This is the only perfect square number. Yes? Sir, if there is like in the option here it is there, but if not, then how to But solve? if they give you 2500 also, in that case, find the LCM and then divide. What is the LCM So of ये this much? 27 number एक बार और बताइए सर. 27 number. In 27 number, according to the options given, this is the only perfect square number. Others are not perfect square number, and it is saying find the least perfect square number. This is the only least perfect square. This is the only perfect square actually. So this is the answer. If they give you two options with perfect square, then you have to find the LCM first. What did I say? Whenever question says exactly divisible by and then some numbers, find LCM. Find LCM. 3, 4, 5, 6 and 8. What will be LCM? 120? 120, yes, sir. Yes. 120 cannot divide 2500. So obviously this is the answer. Unity method. Solve this question. In 57.5 rupees, you can buy 23 envelopes. In 1 rupee, obviously you will buy less envelope. And in 127.5 rupees, you will buy more envelopes. 23 by 57.5 into 127.5. Solve this and you will get the answer. So this is direct relation. Cost, article, direct relation. Time and speed, indirect relation, inverse relation. Sir, it's from chain rule chapter, no? Yeah, this is from chain rule. Relation. This question is also from chain rule chapter, and we learned a formula, shortcut, how to solve any question. So what was the formula? Anyone? Tell me. It's article or money. So it's money or article on the top into time, okay, divided by number. Sir, you Number of told number person. into time by money in the first time. Number into time by money. Did I say Yes. that? Yes, sir. Yes, sir. 36. Even I think so. No, sir. Same this one also. Can No, sir. you please cross check again? Don't confuse Yeah, me. I'm sure.
A man into days. Number Yes, sir. into Men into by days. money. Men into days by money. Yes, sir. Yeah. The same. And this side also same thing. Yes, sir. Men into days divided by money. If you do this, you will get the answer. Men, 36 men, 9 days. So 36 So won't into it be 9 by 36 only? 9,000. Sorry? Yeah, answer So will be without 36 looking only. also you can find out 36 No, only. no, no, not all the time, not all the time. No, but for this question I'm saying. Yeah, for this question. What if I make this 6,000 in 5 days then? Then we'll use that one formula. Yeah. So always remember this. Average chapter. Remember, you should have basic knowledge of algebra, how to form an equation. That is important. The average of 3 numbers is 52. Okay, so from that we can find the sum of those 3 numbers. But what are those 3 numbers? The first is half of the second, and second is twice the third. First is half of second. If I take second as 2x, first will be x. The first is half of second, is it? Yes. And the Yes, sir. second is twice the third. Second is twice the third. So we have 3 numbers and their sum is equal to 52 into 3. 52. 156. Yeah. 156. 156. So sum of 3 numbers is 156. You need to find the difference between the second and first number. 2x minus x kitna hoga? You need to find x basically. Shall you 39. find? Can we 39. say that 4x 39. equals 156? X is equals to that. X equals X is equal 28. to 39. 39. Okay, sorry, 39. 39. So x is equal to 39. That is the answer. We need to find 2x minus x only. Okay. Now this question is related to percentage chapter. The price of a book is reduced by 25%. Let's assume that earlier price of the book was 100 rupees. 100. And new price, this is old, and new price is 75 rupees. 75. What is the ratio of change? How much is change? 25. 25. What is the ratio of change in present price to the old price? 1/4? 1/4. That is your answer. Yes. Carefully you have to choose which one to take 100 in this question 32. A earned 30% more than B. B earned 10% less than C. So I'll take C as 100. Yes, sir. Then I can write B earned 10% less money than C. So B earned just 90. 90. Okay. And A earned 20% more than B. It And means A 110. earned 108 rupees. 108. 8. A is 20% more. 20% more means 90 into 120 by 100. If you solve this, you will get 100. 10% less means 100 into 90 by 100. 90. Do you remember? I told you 10% less means 90. 20% more means 120. We always work on 100. So your what is the question? A earned more than C. Between A and C, the A is earning 8% more. 8%. So can you explain that question again? 32. In 32, you need to work on some base. I have worked on 100. So I have taken C as 100. You cannot take A as 100. Your answer will be wrong. A earned 20% more than B. Just suppose we have only two entities, then we'll take B as 100. A earned 20% more than B. Only if this much is there in the question, then we'll take B as 100. We will not take A as 100.
But in this, there is second part of the question also, which says B earn 10% less than C. That's why I have taken C as 100. Now take C as 100 and read this question in reverse order. It will make sense. If C is 100 and it is saying B earn 10% less than C, can you find B quickly? Yes, sir. Yeah. And then if you know B, it's saying A earn 20% more than B. So if you know B, you can find A quickly. Sir, how A came 108? Which is 20% more than B. 20% more than B. So B should be 80, right? No. No, 80. No, B is 90 correct, but 10% A less I'm not than. getting as 108. B is this much, this is B. 20% more matlab 120. B into 120 by 100. Solve this. 2012. 12 into 9, 108. 108. Okay. Okay, and what is 20% of 90? 18? 18. 90 plus 18 is 108. Yes. Profit and loss. A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he uses a false weight. And I'll solve this question using options. I will be able to solve in very less time. Okay. Simple thing, I know that it is 25%. This profit or gain percent is given. Gain percent is given 25, which is equal to 1 by 4. Yes or no? 25% means 1 by Yes, 4. sir. Yes, sir. I'll try to do something which is equal to 1 by 4. This side I know that formula is error, okay, divided by false weight, and that false weight is equal to true weight minus error. That is true weight minus error, right? Yes, sir. I'll take a value from the option where this side I'll get 1 by 4. If I take 900, it will be 100 divided by 900, which is not equal to 1 by 4. So I cannot take 900. But if I take 800, error will be 200. 200 by 800 is 1 by 4. So 1 this by is 4. error is, if error is 200, then it will be 200 by 800, which is equal to 1 by 4, which is giving me the correct answer. Yes. So this type of question can be like always solved by the option, right? Yes, yes, all the time, all the time. Okay. We have learned this successive increase or successive discount. We have learned find the single discount equivalent to two successive discount. Formula is x plus y plus under bracket xy by 100. Okay. But since it is discount, so it will become minus 5 minus 20 plus xy 1 by 100. Sorry, 100 by 100, 1. Yeah. 5 into 20, 100, 100 by 100, 1. So answer will be 24%. Our agenda is to solve questions within 30 seconds. Sir, sir, when the successive discounts are given in different way, like first 20%, then 5%. So how is the sign will be changed? Then also you will get the same answer, no? Oh, okay. If it is 2 times discount only, answer is going to same, whether you write minus 5 minus 20 or minus 20 minus 5. But if one time increase and other time discount, then you cannot change the order. Suppose in the question they say 5% increase and then 20% decrease. Then you have to do plus 5 minus 20 minus 1. Yes? Yes, sir. Don't change the order. You can change the order only
if there is discount or if there is successive increase. Only one thing out of two. Ratio. This is easy question. From ratio and proportion, they will ask you easy question all the time. The ratio of number of males to number of females in a club is 7/4. Okay. So write it as 7/4. Remember, this is male and this is female, right? If there are 84 males in the club, male के सामने male को लिखेंगे. Find female. First find female, then you can find total. How will you find? Cross multiplication. Can you find quickly? 48. Yes, sir. 48. Then you need to find 132 is total. the answer. Total is 84 plus 48. Plus 48, 132. Yeah, that is your answer. Mixture and allegation, but easy question. Remember, water we take 0. In what ratio should water and 66% wine solution? 0, 66. 1:5. Remember, this mean value is between these two values all the time, there is no exception. There can be change in position of this and this is also possible. 66, 0, 55. Then also this value should be between these two. This is possible. ये दोनों हो सकता है, but then you need to read that question. Can you see here? It says in what ratio should water? If they ask in what ratio should 66% wine solution and water, then answer will change. Are you getting it? Answer will be 5:1 then. If they write 66% wine solution first and water later, then answer will be 5:1 because water is less. Like which is given in the first, it should be in the numerator. Like it should be in the first in the ratio. Yes, yes. जो पहले दिया है उसको पहले लेफ्ट साइड से लिखना है, जो बाद में दिया है उसको इधर लिखना है. Do I need to solve this question? You all can solve. You can do a piece of work in 80 days. He works at it for 10 days and then B alone finishes the remaining work in 42 days. A was working on some project. He worked at it for 10 days. It means remaining project by A can be completed in 70 days, but B is able to complete the same thing in 42. So their LCM is 210. This is, remember, remaining project, not total project, because A has worked on sometime on this project. A is working A is doing 3 work per day and B is doing 5 work per day. Yes. A has already worked on 10 days. It means A already did 30 work and 210 work remaining. It means total work, I'm writing TW, means total work was 240. Yes or no? Yes, sir. So what is the question? The two together could complete the work in how many days? If total work is 240 and they are doing 8 work per day, 5 plus 3, 8 work per day, and total work is 240, so obviously they will be able to complete in 30 days. Now this question is related to speed, time and distance. Walking 5/7 of his usual rate. Suppose speed 5/7, speed is normally S, but today this I'm writing this as normal speed as S and normal time as T. This is normal, okay? But today how much is speed? Can I say 5S/7? Yes or no? And we know that speed and time have inverse relation. It means time will be 7 T/5. Yes, respond Yes, yes. sir. Okay. Yes, sir. Means today
Which one is greater? Tell me, this t is greater or 7t/5? Which one is greater? T. दोनों में से कौन सा बड़ा है? 70 Okay, so what we have learned in our childhood, हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को subtract करते हैं. What is the difference of their time today? 6 minutes. 6 minutes. If you solve this, you will get the value of t. Now read the question. T is 15. Solve this. Okay. So could you show the whole question once again? I want to take a screenshot. Yeah, this is the question. Thank you. So done. Got it? Any doubt, anything? No, sir. No, sir. Most important thing, did you understand the problem? Yes, sir. Yes, sir. Remember, I told you in the class, speed and time have inverse relation. दोनों का relation is inverse. Okay, this is for YouTube. If you are watching this video on YouTube, tomorrow again we have class in the afternoon. So if you subscribe to our channel and press the bell icon, you will get the notification. Okay, we will be live tomorrow also in the afternoon around 12 or 1. So if you subscribe to our channel, you will get the notification and you can join us tomorrow also. Also, please download Ignite India app. All the study materials are there. So you will be getting all the materials from there. GK is very important topic. So you can download GK material from there. Yes, next question we will be taking. After 2 questions, we are going to do reasoning. So don't worry about that. Simple interest and compound interest. So this question is related to simple interest. The SI on a sum of money is 25% of the principal. Whenever you get question like this, some percentage of principal, you need to do some assumptions. So I'll assume that principal is 100 rupees. Okay. And SI is 25% of principal. So SI is 25. Yeah. So what do I need to find? Rate. I need to find the rate. Rate is equal to SI, rate is equal to SI into 100 divided by principal into time. कितने दिन के लिए निकालना है? And it's given in the question that rate is equal to time. So instead of time, you can write rate because it's given in the question. 5%. Yes. 5 or 6? 5%. Okay. Answer will be 5%. Question number 40. Yeah. If you have any doubt, please ask then and there. I'll explain everything. Try this question. This is easy also.
If you are watching this video on YouTube, if you have any doubt, please write in the chat box, comment box. I'll explain the question again. You need to write in the chat box. Okay, find the compound interest on 10,500 rupees at 8% per annum for 1 year and 3 months, compounded annually. Whenever we get compounded annually, there is no problem. Okay, since time is just 1 year, to find simple interest for 1 year, find SI for 1 year and add that SI to this principal. That is principal for next 3 months. This question is easy. So what I'll do, I'll find simple interest for 1 year. So I'll do 10,500 into time is 8 by 100. 500. How much is this? 840. 850. 840. Now Yes. this 840 will be added to the principal. So what will be the principal? 11340. 11340. 340. And time period is just, rate is going 3 to be months. 8% only, but time is 3 by 12. Time will be 3 by 12 and then this 100. 3 into 4 times and 4 into 2 times. So this is 2268, right? 22. There is something wrong, I guess. So the Zero, double zero. zero is not there. Oh, It's yeah, Double zero yeah, nahi The hai. single zero One आएगा. zero. Yes, yes. 22, 226.8. 226.8. Okay, now you need to solve. I'm not going to solve this. You have to solve this. How much is simple interest for this time? 226.8. 226.8. 8. Okay. And earlier, what was the interest? 840. 840 plus this much. Add, you'll get the answer. दोनों का add करना पड़ेगा. So I think this is 1066.80. yeah. Sir, please explain question 40 again. Okay. So in question number 40, time period is given 1 year and 3 months. Okay. So first you need see simple interest and compound interest. If compounded annually, then simple interest is equal to compound interest for first year. So in this question, if you see simple interest, time period is just 1 year and compounded annually. That's why this 840 rupees is simple interest as well as compound interest. Same hoga first year ke liye. So it's same. What happened is compound interest for next time period, principal changes. Principal is not going to be 10,500. That this interest is going to be added in this principal, and that will be principal for the next time period. We don't say time period for certain period. So in this question, it's 3 months. So we found out that for next 3 months, interest will be 226.8 rupees. So find total interest, add both the interest, that is your compound interest. Now we'll do reasoning. So many people will become happy now. First question, this question is related to coding and decoding. We call it hypothetical coding. Okay. Every code has fixed meaning. Main trick in this chapter is to find the common words. That common thing will give you the answer. What is common? What do we need to find? For which word one is used in the code? Can you see one is here also and here also? Two times one is there. It means meat. Two words should be common between these two. Meat. Meat. It Meat. means one का मतलब मीट होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. का मतलब मीट हो गया. Next, which digit is used for on in this code? On is here, here, 2 times on. What is common between these? 3. 5. 5 is common. The 3 also cannot be determined. Yes, 3 also. 5 also and 3 also.
Cannot be determined. In Yes, that sir. case, if possible, find the meaning of each. We have to check on. On is not in this. So 8, 6 and 1 cannot be answered. In this, 1 cannot be the answer. Because 1 is the answer for meat, right? Yes, sir. So we are left with 5, 4 and 3. 4 is not anywhere. What is unique word in this? Meet me on Sunday. It means Sir, why? me is has meaning 4. Right? Yes or no? Me has 4 meaning. Me means Yes. 4. Yes, sir. Yes, sir. Now what is left? Meet and Sunday. Sunday, meet is here. But 861 cannot be determined is the answer. So if you are able to find common words, only then you will get the answer. Otherwise, answer in most of the cases will be cannot be determined. So Sir, it's not. Sorry. mock test पे 5 था आंसर. मॉक टेस्ट में 5 था नहीं, 5 नहीं होना चाहिए. सर संडे भी तो है कॉमन. Sunday is common between these two, right? Yes. What else is common? Only Sunday. But 3 and 5. 3 and 5, 2 words are there. So you cannot find what is the meaning of Sunday. Either 5 or 3. Same with on. On Sunday, on Sunday. You see on Sunday, on Sunday. So Yes, sir. answer can be 5 also, 3 also. You don't know. That's why cannot be determined. Yeah? Yes. Next 3 questions. Okay, now this question is related to sitting arrangement. In each of the following questions, is based on the information. This is the information based on these next 3 questions. Actually, there are 4 questions based on this information. Quickly we'll solve. 6 friends A, B, C, D, E, and F are sitting around a hexagonal table. Good thing about circular arrangement in sitting arrangement, you can start from any point, you will get the same answer. A is second to the left of F. If F is here, this side is my left, so A is second to the left of A. B is neighbor of C and D. It means B can be here only, it cannot be here. So B is neighbor of C and D. C and D will have this position, one, this and this. E is second to the left of D. E is second to the left of D. If D is here, no. If D is here, then yes. So this will go like this. E is second to the left of D. So C is here. Now this is the arrangement. Complete arrangement. Yes. Which of the following is sitting opposite to E? Which is sitting opposite to E? B. B is sitting opposite. Okay, next. Out of the 4, 3 pairs are alike. Find the odd one out. B, D. What is the relation between B and D? B is to the right of D. B, first one is right. AC is left. A is to the left of C. This is different. EF. I think BD is the answer, right? EF is to the left of F. AC is to the right of C.
So EF. So yes, sir, I'm also getting the answer as A E. and C. 44 B answer is साथ में option 3. 44 answer is Yes, option 3. Option 3. EF. It is EF. So if you Because see EF, Because second it is right second side. person, F is to the right of first. EA, second person is to the right. Sorry, A is to the left. Second person is left, second person is to the left, and B and D, second person is to the left. This is the only option 3. If you see E and F, second person is to the right. Otherwise, in all other options, second person is left side, this side. Which of the following are neighbors of A? Neighbors of A are C and E. E and C. Who is the fourth person to the left of B? B के left and fourth person 1, 2, 3, 4. A is the answer. This question, if you see 47, it's question from permutation and combination. Don't panic, it's easy. So formula is n into n minus 1 divided by 2. N is the number of persons. Handshakes problem. 8 persons were invited in a party. 8 person कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा? 7 लोगों के साथ. But this I cannot shake hand with myself. So this is the answer. Yes, sir. 28. Yes, 28 is the answer. So why did you divide by 2? So that there is no repetition. A ने B के साथ हाथ मिलाया तो B ने भी तो एक के साथ हाथ मिला लिया ना. Yes, we are counting it once, Yeah, right? that's if we are dividing it by 2 so that there is no repetition. There should Okay, not be sir. repetition, no repeat. Okay, thank you. Next question is related to direction test. One morning after sunrise, whenever there is question related to sunrise and sunset, remember in the morning, shadow is in the west. In the afternoon or in the evening, shadow is in the east. This question is sunrise, so shadow will be in the west. Okay. If I am facing this side, if person is facing north, shadow is towards left side. Okay. If person is facing south, shadow is towards right side. Okay. Now read the question. One morning after sunrise, Vimal started to walk. During this walking, he met Stephen, who was coming from opposite direction. एक डायरेक्शन से एक आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन से ऐसे आ रहा है. Okay. Vimal was the shadow of Stephen to the right of Vimal. Means shadow is to the right of Vimal. It means, what does it mean? It means this is Vimal. Yes? Yes or no? If Yes, Vimal sir. and this person is Stephen. To which direction Vimal was facing? Vimal was facing Towards south. South. Blood relation. Introducing in blood relation question, we approach from the back side of the question. Introducing a woman, Shashank said, there's one lady, and then there is Shashank. Okay. Approach the question from backward side. Only daughter of my son means, only daughter of my son means my granddaughter. She is the mother of only daughter of my son. It means that lady is my daughter-in-law. Daughter-in-law. Yes? Yes, sir. Series easy question. 2, 15,
First thing keep in mind in this chapter called series, we find the difference between the numbers. If difference gap is increasing constantly, then there can be rules or series related to multiplication or squares or cubes. In this question, let's check. First difference is 13, second is 26, third is 39. Obviously, 130. it looks like this is table of 52. 13. Yes, sir. Next difference will be 52. 2. So answer will be 132. 132. This one. I'll go position wise. Position of letter 1 is 1. Then next position is 5, 9. So obviously it will be 13. Next is 17. 13 is M. Again position wise. 4, 8, 12. So 12 plus 4, 16. 16 is P. MP is the answer. Yes? Yes. Yes, sir. Percentage chapter. The salary of Sunita is 62.5% of what her elder sister Anita is getting. If Anita is getting 12,000, find 62 1/2% of Anita. This is simple question. So I'll do 12,000 into 62.5 by 100. Solve this, you'll get the answer. Yes? 75,000. 7,500. Yeah. Students watching on YouTube, please subscribe to our channel. Tomorrow again we will be having live session, but that will be in the afternoon, not at night. We want to give you rest at night. Take good rest. There is no point of reading at the last moment. Last moment में आराम कीजिए. Take rest, be confident. If you are confident, half work is done. You are going to do great. Be confident, bas. If the income of a manager is increasing, this question is related to successive increase. You can solve. Just now I told you. So what will be the answer? Sir, can you scroll the 52nd question? Yeah. Yes, sir. Successive increase, x plus y plus xy by 100. 21%. 21%. Yes, 21% is the answer. Profit and loss. A dealer is professing to sell his goods at a loss of 4%. So dealer is saying that I'm buying something for 100 rupees and selling the same thing at 96. That's why I have loss of 4%. But since he is a dealer, obviously he is smart. How is he smart? He is giving just 900 grams instead of 1 kg. Suppose if price of 100 gram, 1000 gram is 100 rupees, this is what we have assumed. So what will be the price of 900 gram? Just 90 rupees? Yes, sir. Okay. It means that worth of the value of that item is not 100 rupees, it's just 90 rupees. So he is buying something for 90 rupees and selling the same thing for 96 rupees. What is the profit? Ishu Yadav, please join us tomorrow in the afternoon. This class is related to GAT. We started the class at 7 and that was related to CAT. So right now we are doing GAT. Tomorrow again we are joining around 12:01. Subscribe to our channel. Press the bell icon so that you will get the notification. And then we will be live tomorrow also. So option third. Option third, so answer will be 6 by 90 into 100. Yes, sir. Yeah, 6 by 90 is 1 by 15. 20 by 3. Yeah, 20 by 3. So this one.
3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. 5 members were there in the family 3 years back. So can we say that today, average age of 5 members in the family will be 20 years today? Yes, sir. Today. Yes, sir. With the birth of a baby, if one baby is born, so obviously this number will increase to 6. With the birth of a baby, the average age of 6 members remains the same even today. Now this line is confusing. 2 years. This line is confusing, remember. Remains the same even today means remains 17 only. Because it was 17 and remains the same even today means 17 only. We learned something, do you remember? Yes, sir. 3 will be 1 into multiplied to 17. 5, so it will be Yes. 15. Okay, and 1 into 17 is 17. 17 minus 15 is 2 years. Why did we subtract? Because one is increasing, another one is One is decreasing. So this is decreasing. plus and this is minus. Plus minus minus, Minus. answer 2 years. This question can be solved using 2 methods. One is normal fraction, other you can solve the same question using percentage method. I'll use percentage So because can that you is easier. explain the 55th again? 55th. Where are you facing the problem? The 17. How did the 17 came? It says even one baby is born, but that average age is same. Same means earlier it was 17, today it's 17 only. See, 5 years back, average age was 17. For 5 members, sorry, not for 5 years back, 3 years back. For 5 members, if average was 17, 3 years back, today, for 5 members, average will become 20. Yes, sir. This is what Yes. the first line. For 5 members, average is 20. But it is saying for 6 members, it's same as earlier. Remains the same even today. It cannot be 20 for 6 years also. This is not possible. Because age of one student, one child cannot be 0. 5 का भी 20 है और 6 का भी 20 है. This is not possible. So remains the same even today means earlier it was 17. Today also it is 17. Okay, sir. Thank you. Okay, I'll solve this question using percentage. Okay, 1 by 5 means 20%. So a man spends 20% of his salary to meet pocket expense. So I'll write on pocket expense this person is spending 20%. 4 by 5 of the remainder. Remainder is 80%. 4 by 5 of 80%. How much? 64. His Yes, salary, sir. other expense pay he is spending 64%. If his monthly saving, how much is saved? How much is spent? 84% is spent. It means 16% is saving. Can we say? Sir, how 84? 20% on pocket expense, other expense 64. So 84 is spent, 16% is saving. Yes, yes, yeah, okay. Yeah. And 16% means 1250 rupees. What does 100% meaning? Unitary method. Yes? Apply unitary method, you will get the answer. If 16% means 1250 rupees, 1% means how much, and 100% means how much. Okay, how to solve this question? Simple method is convert that decimal into fraction. So 0.75 you will write as 3 by 4 to the power 3 divided by 1 by 4. 1 by 4 and 3 by 4 3 times. Don't write it as power, multiply 3 times. So I can write it as 3 by 4 into 3 by 4 into 3 by 4. Yes?
and one plus sign and big bracket. I'll write this as 3/4 plus inside bracket 3/4 into 3/4 plus 1. Okay, if you see, everything is in fraction except this 1, so remember to keep this one as separate. Okay, और fraction का सारा काम कीजिए, you will get the answer. So I can do this 1/4, 3/4, it means 3 times. So this will be 27/16 and this will be 3/4 plus 9/16 plus 1. Now if you see, everything is addition only. Keep one as separate and do this addition of this much. Can you do this? Yes, sir. Later on you can add 1. It's 48/16 plus 1. 48/16 is 3 and 3 plus 1 is 4, so 4 is the answer. Sir, if we take LCM, it would be the same. Yeah. Yeah. Okay. How to solve this question? I think I can write every number in the power of 4. Can you write? Yes, I can write. 16, I can write 4 square. And 4 square per power x plus 1. Yeah? To the power 4 cube into 4 to the power minus x. When base is same, in case of multiplication, we add, right? दोनों तरफ क्या हो जाएगा? This side I can write 4 to the power 2x plus 2. Plus 2. This side I can write 4 to 3 minus x. Now, if base is same, exponent will be same. What will be the value of x? It will be 2x plus 2 equals 3 minus x. This x will go this side, so it will become 3x equals 1. X is equal to 1/3. 1/3. And what do we need to find? 1/3 का cube. 1/3 का cube कितना होगा? 1/20. 1/27. Yeah. This is long question, but if you read, you will find out this question is related to HCF or LCM. Minimum number of slabs matlab? LCM? It means maximum size. Suppose you have this much area, okay? You want minimum number of square slabs. Can I say I want the maximum size? So that I have to put only 6. Can I say this? Or I have another option where I'll put a smaller size. Like this. Minimum number of square slabs means maximum size. So whenever question is related to maximum, this minimum word is used to confuse you. In this case, you have to find HCF. Read the question again, you will find out. और एक और चीज कॉमन सेंस आएगा. एक चीज मुझे बताओ, ये इसका और इसका एलसीएम कभी 4, 5, 6, 7 आएगा? नहीं आएगा ना? No, sir. कॉमन सेंस कहता है कि एचसीएफ पता करना है हमें. फाइंड द एचसीएफ. यूज ऑप्शंस. आई एम टेलिंग यू ऑल द टाइम. सपोज यू आर राइटिंग द पेपर, यू फॉरगॉट द फॉर्मूला, कुछ नहीं आ रहा है समझ में. यूज ऑप्शंस. You will be able to solve. I'm telling you. Sir, English bhi kara do. Join us tomorrow in the afternoon. Also, please download our app, Ignite India Education. You'll find
इन प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड, iOS के लिए भी हमारा ऐप है। Subscribe to the channel and press the bell icon. Tomorrow you will get the notification and then you can join. और कल हम दोपहर में इवनिंग में करेंगे, रात में कोई क्लास नहीं होगी। So tomorrow we are going to finish everything by 5-6 p.m. No class after that. Okay, find the HCM. Sir, 6. Any doubt in this? There should not be any doubt. So what is the answer? 6. 59, 3, option 3, 6. Okay, A and B can separately do a piece of work in 20 and 15 days respectively. Okay, if anyone from MFM Masters, basically MFM, MDes or MF Tech is watching the video, we will have class for group discussion and personal interview also. So in Masters, we have GDPI, we call it GDPI, which is group discussion and personal interview. That weightage is 30%. This weightage will be just 70%. The paper which you are going to write on Sunday, that will be just 70% for masters. Okay, so you can join us for GDP also. A and B can separately do a piece of work in 20 and 15. Simple method. A here, B here, this can do in 20, this is 15. Total work will be 60. 60. If you have any doubt, please ask 60. It means A is doing 3 work per day and B is doing 4 work per day. इतना समझ में आ गया? Yes. They work together for 6 days. It means they have completed 42 work. Yes? It means 18 work is still left and that will be completed by कौन लोग? B is replaced. B is not there. It means A and C. A is doing 3 work, C you don't know, you can find out because this is total how many days? 4 days. You can find out C. What will be C? Quickly tell me the answer. Three by two. 3 by 2 is 1.5. Okay. Yes. It means C is doing 1.5 work per day, right? Per Yes, day. sir. And total work is 60. 60. If C has to alone complete the work, he will take how many days? 60 by 1.5? 60 by 1.5 is 40 days. 40 days. Yes. Again, I'm telling there is not any question other than that profit loss and compound interest जिसमें 30 seconds से ज़्यादा लगे. Minimum 1 minute लग सकता है, but you have to solve the question within 1 minute. If you are writing MFM, BF Tech, 150 questions, 180 minutes. And remember, when you are solving that passage, English passage, it will take the most of your time. सबसे ज़्यादा टाइम इंग्लिश पैसेज में लगता है, सबसे ज़्यादा. Whether you are writing BDS or anything, you might have realized this till now. अभी तक में पता चल गया होगा ना, पैसेज में बहुत टाइम लगता है, गलत भी हो सकते हैं. टेक केयर ऑफ दैट. मैथ्स रीजनिंग में गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. Okay, this is question related to mixture and alligation. A man buys milk at 15 a liter, means CP of milk is 15 and CP of water we always take 0. ठीक है? Yes. So can we say that SP of milk is also SP of that mixture by selling the mixture at 12? Selling of mixture is 12 rupees. What will be CP of mixture? And there is profit of 12, 1 by 2. Find the CP of mixture. How much? There is profit of 12.5%.
प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है, जब एसपी पता हो, प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, सीपी पता कर सकते हैं। Yes. सीपी विल बी लेस देन 12, 10.6. 32 Hello by everyone watching me on this YouTube. Join us tomorrow in the afternoon around 12:01. कितना हो गया CP? How much? बताओ. Tell me in fraction, because if you see all the options are in the fraction only. 32 by 3. पक्का 32 by 3. ठीक है, 32 by 3 is CP. Now we'll apply the method of alligation where water is 0. What is CP of milk? 15. 15, yes. And this mixture ka CP is 32 by 3. Find difference. Find difference. I think it's 13 by 3. ये होगा ना? यही होगा ना? बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Now 3 cancel out. It means if I have to tell the ratio of water to milk, it is 13:32. It means यदि मेरे पास 45 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 32 लीटर मिल्क है और 13 लीटर्स वाटर है. कैन आई से दिस? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? हाउ मच वाटर डिड ईच लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन? कितना वाटर है, वही तो है. इट्स 13 by 45. यदि मेरे पास 45 है तो उसमें 13 लीटर का वाटर है. 13 by 45 इज वाटर. ठीक है, यही है ना? दिस इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क. इजी क्वेश्चन, क्विकली सॉल्व. By 11 PM we will finish the class. 11 PM we'll end. 20 more minutes. Now it depends on you how fast you can solve. Four. Yes. Option 4. देख के ही आसान लग रहा है ना. 3 boys जिनका एज है 2 years, 4 years and 8 years, they want to divide 70 rupees. Divide 70 rupees in the ratio 2:4:8. Can you do this? What did we learn? Find the sum of the ratio. What is the sum of the ratio? 14? 14. So first person will get 2 by 14 10. into 70. Second person will get 4 by 14 into 70. And third person will get 8 by 14 into 17. If you solve this, you'll get the answer. So this is the answer. Yes? Yes. Add the ratio method. There is another method where you can take 2x, 4x, 2x plus 4x plus 8x equals 70. You'll find the value of x. X will be 5. Yes, sir. X is 5. से भी सॉल्व कर सकते हैं. सर कितने बजे ज्वाइन करना है? 12 और 1. So if you subscribe the channel and press notification bell, you will get the notification. So 12 or 1, not before 12. 12 or 1, not sure, but इसी टाइम में होगा. While selling an electric fan, a dealer gives a discount of 5%. It means dealer is selling that fan for 95% of what is the price of that fan. If he gives a discount of 8%, if he sells that same fan for 92% of what is the actual price, he will have loss of some 36 rupees. Can I say this? This minus this is equal to 36. Now solve. इसको x मान लो. ठीक है? It will be 95x by 100 minus 92x by 100 equals 36. Find the value of x because x is marked price.
1200. Okay, so I'll say that 95x by 100 minus 92x by 100 is equal to 36. If you solve for x, you will get 1200. Solve this question using options all the time. Options method use ही नहीं करना है. The number of a 2-digit number which on being reversed. Being reversed का मतलब पता है आपको? Being reversed means if I have a 2-digit number 41, इसको मैं reverse करूँगा तो ये 1441 बन जाएगा. This is the meaning of being reversed. Okay. Their digits exchange the position. Gives out perfect square 2-digit number. ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं इधर इधर करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? एक तो मुझे लग रहा है 61, इसको मैं इधर उधर करूँ 16 बन जाएगा, विच इज परफेक्ट स्क्वायर. और क्या हो सकता है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? सो डायरेक्टली आई राइट द आंसर. वन नंबर इज 52. So 36 as well. वन नंबर इज 61. वन नंबर इज 63. और क्या क्या हो गया? यहाँ से कर लेते हैं ना. 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 7, square of 8 and square of 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 such numbers. Yes. 6 numbers are there. If you exchange, reverse the digit, it will become perfect square. Simple interest. John invested a sum of money at a certain rate of simple interest. For 7 years, he got double the sum he invested. The assumption. Suppose he invested 100 rupees, okay, and he got 200 rupees. Can I say SI is 100 rupees? Yes. Or do you need to find the rate? This I am not going to tell. So answer is 14.2 by 7%, right? बताओ. Yes, sir. 7 years. So 100 by 7, yeah. A sum of 8,000 is deposited in a bank. The rate of interest in the bank for first year is 5% and for the second year is 8%. I think you can solve this question using successive method also. Yes, sir. So you need to find that successive rate SR, which will be 5 plus 8, 13. 13. And 0.4. 0.4. So it will be 13.4. 13.4. Yeah. What do you need to find? Compound interest. So answer will be 8,000 into 13.4 by 100. If you solve this, you will get the answer. इसको डेसिमल उड़ा दो तो ये 8 0 चला जाएगा. 134 into 8 ending with 2 is the Option answer. 1. Yeah. सर कल पैसेज भी करा देना आप. पैसेज भी करा दो कल. पैसेज में बस एक ही प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे पूरा पैसेज आएगा कैसे? इफ आई रिड्यूस द साइज ऑफ दिस, यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग. सो रोशनी, अदिति, नीतीश झा, you can reach out to us and you will get the class link for free. You don't have to pay anything. Tomorrow's class is free for everyone. So if you reach out to us, you'll get the class link. So then you can join through Zoom meeting only. A marriage party travel. Okay. Now this question, in speed, time and distance, we learned for average speed. Okay, 3 rules we learned. Do you remember? Case 1, case 2, case 3. Anyone कोई बता सकता है?
there were 3 cases for average speed. First one when time is same, ठीक है, एक इंसान को A से C तक जाना है थ्रू B, okay, from A to B time is some fix x, B to C again time is fix x. What is the average speed? Average of the speed plus y/2. दोनों का एवरेज ले लेंगे टाइम का, सॉरी स्पीड का, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर. 55. So one is total distance by If the total speed of the time. train is 60 km per hour, the duration of the whole journey is. Sorry, क्या बोल रहे हो आप? Yes, answer 67. See, from A to B, speed is given 50 km per hour. Can you see here? From B to C, speed is given 60 km per hour. So average of 50 and 60 is your answer, 55. Okay, in average and speed, there is second concept. It says a person is going from A to B, okay, and coming back from B to A. While going speed was x, while coming back speed was y. In that case, average speed is 2xy divided by x plus y. यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस भी नहीं पता है, जाने और आने का स्पीड डिस्टेंस सेम है इतना लिखा है और जाने आने का अलग अलग स्पीड है. ओके, एंड देन देयर इज थर्ड केस. व्हाट इज थर्ड केस? Is there any third case also? No, sir. नहीं है तो छोड़ देते हैं. There were 2 cases only. Okay. Train पे 10 more minutes. It's 10:50 now. We will finish our class by 11. A train 135 meter long passes a boy standing on the platform in 7 seconds. Whenever there is train, length of the train is considered as the distance. So speed of the train is equal to 135 by 7. Sometimes you have to be smart. Don't solve this. इसका कितना आएगा? Don't find the answer in decimal. When I see this 21, I know that 721 cut होने वाला है. Okay, this is the speed of the train. Okay, what is the next part? But it passes the platform completely in 21 seconds. Find the length of the platform. So we have learned that time is given 21 seconds and time is equal to distance, which is the length of the platform plus length of the train divided by speed of the train. Now solve this. Cross multiplication होगा, ठीक है. Whenever there is platform and train, total distance is the length of platform plus length of train. 270. 270 is correct answer. If you solve this cross multiplication, you will get 400. How much? 5. Yeah, Yes, sir. 4 is 405 equal. equals 135 plus x, that is 270. Boats and streams. One question तो करना था हमें. A boat can be rowed with the stream. Remember, with the stream means downstream. With the stream is downstream. Downstream speed is, you can find from this data. It's 1.5 kilometer in 15 minutes. It means 6 kilometer in 1 hour. ठीक है? It's 1.5 kilometer in 15 minutes. So 60 मिनट में 60 मिनट के लिए 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 आ जाएगा. It means 6 kilometer per hour. Okay. And the same distance against the stream. Against the stream means upstream. It's 22 1 by 2 minutes.
means 1.5 kilometer in 22 1/2 minutes, 22.5 minutes. इसका मतलब per hour कितना हो जाएगा? We have to find per hour. Can I say that in 45 minutes, 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा? So इसका मतलब 60 मिनट में 4 किलोमीटर हो जाएगा. So upstream speed is 4 kilometer per hour. If you know downstream and upstream, you can find rate of the stream, that is average of this. यही होगा ना? Not average. 6 minus 4/2. Answer will be 6 minus 4/2. Speed in still water will be 6 plus 4/2. What is the answer? 1 kilometer. Okay, one question related to direction test. Aisha started traveling east from a point A for 800 meter. एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ईस्ट जा रही है आयशा 800 मीटर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए. At the end of 800 meters, she reached point B. Now this is point B. Okay. She took a left turn. This is right turn. Obviously, this is left turn. And travel for another 500 meters. Okay. And point C पहुंच जाती है वो. From point C, she returned left again. And travel for 400 meters. Remember, ये 400 की डंडी 800 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, कभी भी 400 यहाँ तक नहीं आएगा. If 800 is this much, 400 will be half of this. ठीक है. Point D. Now this is point D. In which direction is point D from point A? A से D किस डायरेक्शन में है? ये कौन सा डायरेक्शन है? Northeast. Northeast. ये कौन सा डायरेक्शन है? Northeast. So answer is northeast. Okay, last two question. Last two, 71 and 72. First, read the instruction. This question is related to assertion and reason. Okay. So out of these 4 options given, you have to select one. Select option 1 if both A and R, assertion and reason, are correct and reason is the correct explanation. Jellyfish uses its tentacles to subdue a prey. Prey मतलब वो उनका शिकार जो होता है. So first. A jellyfish has stinging cells in. Now this is, I call this as GK. ये जनरल नॉलेज, इसका नॉलेज होना चाहिए. Only then you can solve. Otherwise, please skip. If you are not confident, skip. Don't get negative mark. Negative mark is not suggested. So in this question, answer is 1. Both A and R are true, and this is also the correct explanation. Stinging cells मतलब चुभने वाला, नुकीला. Okay, second one. According to a government data, the population of milch cow foreign breed has increased by 60%, while that of domestic breeds has increased by only 2% in the last 7 years in India. Now, this data is from some newspaper. अब newspaper आप पढ़ते हो तब ये आपको पता होगा. And this is true. Milk cow foreign breed gives a much higher yield of milk. This is also true. So answer is again option 1. Okay, this is also 1. So in assertion and reason, statement and conclusion, in all the chapters related to statements and its products, you should have knowledge of GK. If you are lucky, you will get easy question which you already know. Sir? Yes. I have a question. So एक सर्कल है, उसके 3 पार्ट्स है, एंड ऊपर वाले पार्ट्स में 24 है, एंड राइट पार्ट में 4, एंड लेफ्ट पार्ट में 32. What is this circle about? एक और सेकंड सर्कल में ऊपर के 60 है, देन राइट में 5 और लेफ्ट में 43.
हाँ थर्ड सर्कल में ऊपर क्वेश्चन मार्क है, हाँ राइट अच्छा में समझ गया. 6. This is not in the syllabus. Which paper are you going to write? Which सर course? मॉक टेस्ट, बी टेस्ट. B-Desk में mock test में ये था. यस सर. I remember this was this related to Venn diagram? या सर. Venn diagram ऐसे थोड़ी बात कर सकते हैं, वो उसके लिए तो क्वेश्चन चाहिए. ना सर, ये क्वेश्चन था उसका, मतलब क्वेश्चन मार्क में जो था उसको मैंने सॉल्व किया था, तो उसका रिलेशन नहीं निकल रहा है 32 एंड. अच्छा, डू यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर? नो सर. तो किसी से लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए. ओके. ठीक है. रोशनी गुप्ता इज आस्किंग सर जूम का लिंक कहाँ मिलेगा? आई गिव यू वन कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए. ठीक है. सो इट वुड बी बेटर इफ आई स्पीक दैट कॉन्टैक्ट नंबर. प्लीज नोट डाउन. इट्स 99. एक मिनट. So it's 9972046911. I'll write on the screen. ठीक है. It's 9972046911. So you can WhatsApp this on this number, or you can call on this number, and you can ask for Zoom meeting link. ठीक है. और आज का क्लास हम यहाँ फिनिश करें. Just 1 minute. So tomorrow, what are we going to do? Well, so aptitude session is over here, right? Hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Aptitude session कैसा था सर के साथ में? थोड़ा आइडिया हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिए. Class timing will be in the afternoon. See, my plan is tomorrow we will finish everything by 6 p.m. कल 6 p.m. के बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे. We'll take rest. You will not revise anything. Don't worry. इतने दिन में जो पढ़ना था पढ़ लिया. कल 6 p.m. के बाद पार्टी करनी है. ठीक है. पार्टी मतलब जगना नहीं है. ऑर्डर पिज्जा. डोंट ईट पिज्जा. अगले दिन प्रॉब्लम हो गई. ईट हेल्दी फॉर नेक्स्ट 2 days. टेक गुड स्लीप. ईट हेल्दी. ठीक है. 14 को इवनिंग में पार्टी करेंगे. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So is there something going to happen or can we leave? Just wait for 2-3 minutes. Krishna sir will say something and then you can leave. Just 2-3 minutes.
चलो तब तक ज्ञान की बात करते हैं, मोटिवेशन जरूरी है। What about your confidence? Are you feeling low? Nervousness हो रही है? Yes, क्या होगा sir. नहीं होगा? Yes, sir. There should not be any Somewhere in nervousness. between, sir. You have studied so much. बहुत ज़्यादा. I am telling you, there will be students. Since this is national level examination, there will be students from all over India जिनको syllabus भी पता चला होगा last month, and then you have prepared for last 5-6 months. Some students have prepared for more than 6 months, 8-9 months, I know. So you are much more better than those students. जिनको कुछ लोग होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा, वो पेपर देने आएंगे कल Sir, परसों. how many what do you get? How many Students are people there. pass? Like seats are there. See, seats are that you can see in the prospectus. Number of seats, number of per students per campus, everything is mentioned in the prospectus. सब बहुत डर लग रहा है. डर क्यों लगेगा? पढ़ाई की है ना, तो डर क्यों करना है? जहां पे मैथ्स में लगे फॉर्मूला भूल गए हैं, ऑप्शन से सॉल्व करने, मैंने बताया कैसे ऑप्शन से सॉल्व करना है. यस सर. हाँ, ऑप्शन से क्रॉस चेक भी हो जाता है. रीजनिंग में कोई फॉर्मूला होता नहीं. इफ यू रिमेम्बर द पोजीशन ऑफ लेटर्स, 3-4 चैप्टर तो तुरंत सॉल्व होगा. यस सर. जीके सबसे बुरा है. जीके हमने इतना ज्यादा किया है, पहली बार इतना ज्यादा जीके किया है. बट फिर भी बुरा है सर मेरा. फिर भी इतना करके भी लग रहा है जैसे और भी बहुत कुछ बाकी है जानने को. नहीं है बाकी, डोंट वरी. करंट अफेयर्स में कुछ आ सकता है इधर उधर से. करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी ऐसा लग रहा है जितना भी तैयारी का है उतना ही कम ही है. या एग्जैक्टली होता है. डोंट वरी, सब हो जाएगा. Sir, I'm a mix between nervous and okay, I can do it. You don't have to be nervous. Just tell yourself that you have studied, you have prepared well, you are going to do great. 1 महीने में टॉपर बना जा सकता है, 4 महीने तो काफी है. So can't help the jitters. But still, this is new. This is not going to die any day. ये कभी नहीं जाएगा. Digital will be there all the time now. In future, we will have offline classes, online classes. दोनों चलता रहेगा. And thanks to digital, now we are at least 6 to 7 years ahead of the time. यदि पेंडेमिक नहीं आता तो जो ये क्लासेस डिजिटल इतना ज़्यादा बढ़ा है ना, ये मे बी लास्ट 5 years के बाद होता. नेक्स्ट 5 years. 25 में जो चीज़ होता ना, वो 2020 में हुआ है. Yes, sir. So this is, we can say, positive impact of corona. कोई नहीं, ये हम बात करेंगे जब MFM का GDPI होगा उसमें, और MDES, MFTech, BDES वाले मजे करेंगे. They will write situation test. Krishna sir is still busy, so I can't allow you to go. You have to decide. Good sleep means good sleep. I don't want to see anyone texting me at 3 p.m., 3 a.m. कि मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, छोड़ो, अब नहीं करना है सॉल्व. So only because of today's class I'm awake, otherwise I would have been asleep by now. 12 means 12 o'clock sleep. Tomorrow sleep at 11. Sir, maybe 10. So these days I've been sleeping at like 10:30 and waking up at 3 o'clock in the morning. That's better. Every day I sleep at 11, except last 10-15 days. Sir, but I wake up at 3 o'clock, no? 3 o'clock? Yeah. 3 o'clock is not good time. 3:34. I wake up by that time if I sleep at 10:30. हाँ तो बढ़िया, उसमें ज़्यादा जीके याद हो जाएगा. You can do GK. If you have that book called, what is the name of that book? Arihant. कुछ नहीं करना है, just open that English section
and go through all the synonyms, antonyms, one word substitution. Just go through. Don't Arial remember. doesn't have synonyms, Don't antonyms. mug up. एक बार देख लेना है, इससे क्या होगा It ना, has. if you just go through it, बहुत सारी चीजें याद रह जाएंगी. Yes, sir. Practice. अच्छा, that part. Okay. Got it. Just go through it. Don't try to remember. Just go through it. And this will give you 5-10 marks extra in English. I'm telling you. He's saying 2 more minutes. But I can see just 25 participants, including us. सर कल क्या होने वाला है क्लास में? कल कुछ क्वेश्चन बच गए ना, वही करवाएंगे. सर आई रियली होप कल का क्लास ज्यादा आज जितना लंबा नहीं हो. नहीं होगा, कल नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू ना, टुमारो बाय 6 PM we will finish everything. Yes, No, over to Krishna sir. Today's class was okay. Well, so ideally, if anyone feel that you are ready for the exam, today class was also not compulsory. It is not important what happened in the class. You are aware about it. Is for a people who started preparation on last moment, on you feel like okay, the sitting alone and you are feeling anxiety, problem हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये दिक्कत हो रहा है, ये सेशन उनके लिए है. तो वो सारे बच्चे जिनको कोई ना कोई दिक्कत है वो जरूर आए. The how long session is not really very important. The most important thing is that session is important for you or not. Be it you are a student and you are like you are on YouTube or maybe अभी आज भी कई लोगों ने कॉल किया, कल किया, 2 दिन पहले किया. So I do understand कई लोग किसी तरीके से शुरू करते हैं. जैसे मैं कई सारे पेपर का थ्योरी का स्पेशली while I was in college, तो मैं एग्जाम के दिन सुबह ही पढ़ता था. तो दिस लॉजिक कैन नॉट वर्क. जो आपने अब इसकी पढ़ाई नहीं करनी एग्जाम के दिन, तो पूरे साल नहीं पढ़ा तो एग्जाम के दिन भी नहीं पढ़ो, कैन नॉट वर्क. कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे आपके इस एग्जाम में भी, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म भर दिया होगा, एडमिट कार्ड आया, आज या कल प्रिंट आउट लेंगे और एग्जाम के दिन सोचेंगे अच्छा क्या करना है, या कल से सोचना ही शुरू करेंगे. And that's I every year I meet few, or it's hard in fact, like and they acquire even good rank. So what you did over the year that hardly matters. आपके लिए भी 1 साल 2 साल 5 साल कब से कर रहे हो आप, मैंने बताया, मैंने 5 बार एग्जाम दी. कई बार ऐसा भी हुआ मेरा निफ्ट में होने के बाद जो उसके अगले साल एग्जाम दिया था, बट आई वाज नॉट कंसर्न अबाउट द पेपर, तो वो फर्स्ट राउंड में भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट नहीं आया. और ऐसे भी वो दे भी रहा था ऐसे टू फाइंड आउट मोर लाइक एक्चुअल पैटर्न, और कुछ रीजन थे विच वी कैन नॉट डिस्कस हियर, क्या कर रहा था मैं वहां. सो टू एक्चुअली दैट वाज अ पायलट स्टडी मोर लाइक, जो कैसे होता है, क्या इस एग्जाम में होता है. एंड दैट्स प्रीटी मच लीगल. स्टूडेंट्स हु इज eligible, they can go right and see. Same while in college, every year we see how they take situation test, kya marking hota hai. So that ecosystem se you learn, because that's always, if you will write the exam in Bangalore Nift, so it's in AD lab or TD department. Or fortunately, I was in TD department. So students who is there in the college, even though exam is on Sunday, can go for their lab work and all. Abhi ka rule शायद कुछ अलग है. तो वैसे परमिशंस होते थे और हम जाते थे कैंपस में. That's for us also. तो वो आपके काम का है या नहीं है वो मैटर करता है. जैसे मैं कॉलेज में था, मैं वो कर रहा था, प्रैक्टिस में था, मेरे काम का था. बट कई सारे लोग जो बच्चे कॉलेज में हैं, बट उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिचुएशन टेस्ट कब है, या आप 4 साल बाद आपके लिए, आप में से बहुत कम लोगों के लिए मैटर करेगा तो क्या हो रहा है, या नेक्स्ट ईयर भी. तो इट्स डिपेंड ऑन इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. आर यू गेटिंग इट? मेरी बातें समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट जो कृष्णा सर कुछ बता रहे हैं या नवीन सर बता रहे हैं. तो जैसे मेडिसिन होता है ना, इफ इट्स यूजफुल यूज इट, इफ इट्स नॉट यूजफुल प्लीज गो अहेड विद योर प्लान. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट माय प्लान एंड द वे आई एम टेलिंग यू, दैट इज इम्पोर्टेंट. कुछ चीजें होंगी which is in afternoon session, maybe 12 or 1 will start. तो that's what नवीन सर ने 2-4 बार YouTube के लिए भी बोला, जब somebody who is connected on YouTube, make sure you press the bell icon so that आपको notification आ जाएगा at a time whenever we go live. और आपके लिए, आप लोगों को तो obviously you will get the link. So right now also everyone is not here in the class, right? सब तो क्लास में नहीं है ना अभी भी. तो क्या होना है, how it works actually. So जो भी आप आते हो, एक पर्टिकुलर होगा सेशन विच इज इंपॉर्टेंट. रेस्ट ऑफ द सेशन इज मोर लाइक स्टूडेंट बेस्ड. कई लोग अभी 1-on-1 क्लास करके सीख रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है.
कई लोगों को उस क्लास की जरूरत नहीं है because you are done enough. अब आपको खुद के प्लान की जरूरत है. Well, so if you have some work, कुछ लोगों ने भेजा भी था, तो we can have a last minute discussion that one for any group, any student. क्योंकि I have promised you guys, or else we in this session within 15 minutes. 11:30 class खत्म हो जाएगा. Anyhow, we'll close this session. Before that, I just want to know अगर कुछ है तो आप share करो. We'll discuss. That's first half. How was the session is for the design part. The helpful आगे वो होगा, है ना? और अभी भी अगर किसी के लिए ये सेशन अभी का डिस्कशन इफ यू फील लाइक यू नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट you can leave it. Thank you, welcome. Yeah, so something which is connecting you, that is what our job is, last minute I have to make sure that वो करें. मुझे मेरा एक ही एजेंडा है, मुझे एग्जाम को आपके लिए ये बना के नहीं रखना है. If you want to share, not share, ऐसे कोई दिक्कत नहीं. आपको एग्जाम, आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव ड्राइंग नहीं है, आपका एग्जाम ह्यूमन एनाटॉमी नहीं है, आपका एग्जाम सिर्फ ड्राइंग नहीं है, या आपका एग्जाम सिर्फ मैथ्स नहीं है या इंग्लिश नहीं है, जो पार्ट आप सोच रहे हो. दिस एग्जाम इज वे डिफरेंट देन दैट. दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड द बेस्ट वे व्हाट यू कैन. जैसे होता है ना, वी वेयर द बेस्ट क्लोथ व्हिच यू हैव. तो आप जो है ना डे के लिए अच्छे से तैयार होते हो, तो बस वही करना है. एग्जाम के दिन जाके बेस्ट करके आना है, और ट्रस्ट मी यू विल हैव अ गुड रिजल्ट. कई सारे ऐसे बच्चे जो बियॉन्ड जाते हैं और उनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते. So that is what important for any one of you, be it here or anywhere in the world. So that's what somebody who do not prepare at all, they also go and perform well in first round, और situation test में और अच्छा कर लेते हैं prepare करके. So do you guys have anything to show right now? कुछ लोगों ने मुझे WhatsApp पे भेजा था. On this screen you want to share ring? You have something or anyone else who should be in this session? जल्दी बताओ. हाँ? No, sir. I'll just check from my batch if anybody has sent. Again, you have to check. That's what I've given you 2 hour time to check. In between. Anyway, Ankita, Ansika, Anushka, it's not compulsory. If you have, then it's okay. If you want to discuss, Manashvi, Mansi, Naga. So no one has sent anything in the batch. No one has sent. So cool then. Yeah, it's good. You are quite confident. Like you do not have anything to discuss as such. So I would like to tell you, make sure. Try to, if you do not, if you prefer, take milk before sleep so that you can have a good sleep today or tomorrow. I think it's help sometime, or the morning also, day also, try to take proper meal. And we'll have one light, kind of a light session, nothing called subjective, very subjective tomorrow, or anywhere. If you're finding it problem or you need some class, the classes is there tomorrow, but that is more one-on-one. That's have been discussed. So whichever chapter posters problem anybody is having it in the class, or maybe your friend somewhere is facing a problem, or somebody who is connected us through app, YouTube, or whichever medium you are. So make sure you contact us without any further delay, because that is what the day is there in our hand tomorrow, and we will utilize the day properly. Yeah, tomorrow after the evening, that's general recommendation. Do not study anyone, be it you have started just 1 week before and you are doing it from a year or 2 years. All right, that's it. Any question? Or should I end this session? Not compulsory to drag 10 more minutes. Anyone? No? Yes? Anything? I think you guys are done now. No, sir. Thank you. Good, Ansika. Thank you so much. Anyone else? No, sir. All right. No, sir. Sir. So that's it for the students who are there in the class. There's nothing now. I will just have few continue discussion with the students, so they are there on YouTube. So for you guys, it's over here. Thank you so much. So I'll continue with them 10 minutes maybe. Then I will guys with them then, and we'll end the session. So I'm taking some of the questions and some of them writing here in YouTube now. So yeah, the 17 just minute before, sir, poster is still sucks. Yeah, Uday, if you are having a problem in poster, we have discussed in a session. Hey, here in the class, all of you, it's not like I am here live, so you need to stay back here. If you want, you can listen. These are the questions which students have asked. Uska kya problem hai, uska kya solution hai, or else you can leave. It's not important to stay here. No, I know you are attending the session from last 4 hours. That's quite huge. So, अगर किसी का छूट गया है, तो I would request you can go and watch that video of previous parts.
which is there on YouTube. So Uday ka question hai, you have asked posters. Poster related we have discussed a lot, and there is a lot of material there in app. And Uday, you can in fact download the Tech India app. There you will get test paper also. You know, the complete test paper is free. That's there is a free करके batch बना हुआ है जो हमने decide किया था exam से पहले बच्चों को provide कराएंगे. So that's on 13th. You can go and write that one. So everyone who is on YouTube right now having any question you can ask immediately. I will answer you. Uday Sonkar answer most effective write-up style or method. See, method of the write-up is always yours. It is not compulsory. You should have someone else. आप जैसे comfortable हो वही best होता है. और अगर आप write-up में line में comfortable नहीं हो तो I will suggest you to go with the keywords. Keywords also you can use it. क्या क्या आपको use करना है. आप call कर लीजिएगा हमारी team को, हम आपको help कर देंगे. Taking few more questions. So, sir, poster done in composition. There is no strike rule to sketch in perspective. No, not at all. Very important. In fact, the students are here in the class. I'll tell you. एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है. In composition, there is no strict rule to sketch in perspective. Not at all. Perspective कहीं से जरूरत नहीं है किसी बच्चे के लिए तो आपको perspective में उसको draw करना ही करना है. Sir, Zoom का link कहाँ मिलेगा? Oh yeah, class is over now. Sorry. Rosni, I see you have asked sometime before. I hope you are there. So now you do not need to ask on Zoom. आप डायरेक्ट YouTube पे पूछ लो, मैं यहाँ से बताता हूँ. और कल के सेशन के लिए आप अभी बेल आइकन प्रेस करो, आपको सारा डिटेल जो है वो मिल जाएगा हमारे क्लास का. ओके सर. अदिति रोशनी गुप्ता सर कल पैसेज भी करवा दो. Hey, I will not suggest anyone to go for passage, maths or as such the class. आपको अगर एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है तो बेस्ट वे इज टुमारो एक या दो टेस्ट पेपर दे दो और वो टेस्ट पेपर इग्नाइट के ऐप पे फ्री है. ऑल द स्टूडेंट्स देयर ऑन YouTube, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जॉइन यू बाय इंपॉर्टेंट कॉल आई एम हैविंग. So thank you guys. So next question from Uday is answer most effective write-up style. That also has been discussed. So that's what I cannot see now any more questions over here from you guys. So let's. So will you upload this video on YouTube? It is there on YouTube. No, this live video. Yeah. It will be there. You can share with your friends and the people. Okay, thanks. Yeah. Sanjana, how was the session? Is it helpful for you? Yeah.
It is. It is. It is. So before the session, what was your doubt? I just want to know on a pilot level. Very few of are here. So I just want to know, before the session, what do you feel? क्या चल रहा था आपके दिमाग में? एग्जाम आप दे रहे हो तो मुझे पता नहीं होगा ना क्या हो रहा था. तो आप क्या सोच रहे थे? मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट देन आई थिंक आफ्टर द सेशन if I like redo all the questions, I think I can write my math part nicely. इसलिए हमने ना एप्टीट्यूड में आपको तरीके से ज्यादा ये बताया जो आपको सॉल्व कैसे करना है और ड्राइंग में बताया जो कैसे करना है. नाइस. तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गैट और कैट दोनों को. Now I'll solve the questions again. I think I'll be able to write. Yes. This session is, that's what we had in this session today. It is very useful or important for all of them. And anyway, कल का सेशन और भी जरूरी होगा जिसको हम करेंगे वैसे ही. आप में से किसी और का कोई ओपिनियन है आज के सेशन के लिए? And then we'll end this session. किसी और का? Very few are. Yeah, Vijay. Sir, I am Priya. Sir, I sent my work on WhatsApp now, sir. So here you said, I have your work. Could you please? Still we have 6 minutes. Do you want to share here your work right now? Priya? Give your review, sir. I'll give you my review, but I want you to share here. Can you? Sir, I don't understand. Huh? Priya, your number end with 9971, right? Yes, sir. I'm not sharing it here, but in short, I will tell you. Background color, please try to improve in question number 1, where you have created the bird. What is the topic for this one? I'm looking it right now. Could you please tell me? Yes, sir. It's artwork for drawing room. Drawing room artwork. Yeah. So make it nice background. No? Don't you think background you need to improve a bit? Yes, sir. Then some champions trophy and all. Again the background. Foreground objects elements are good, but the placement can be better. Okay. Okay, sir. Last one is good. In compared to this two, last one is good. You may get 20 plus or around 20 in last one, but this two you will get very average mark, maybe 10. Okay. Yeah. So you have to improve to get the average, more than average score. What you can do it in the app, you can go and write 1 or 2 test paper meanwhile. All right. Okay, sir. So those tests in Ignite India app is free for all of you. Any of the student can go and they can write the test, and that's free for next, till your exam. That means till tomorrow you can write all the page test paper whenever you wish, whenever you want. You can go and write, and we are up for all the question for a while tomorrow also for all our YouTube viewer as well. So that's it from the today's session. Thank you so much everyone for watching this session and joining us today. Yeah, thank you. All the best. God bless you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah, take care. Good night.